200 रन कम से कम बनना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर और अगर ऐसा कर दें तो बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं आप लोगों की आवाज भगवान और भारत दोनों तक पहुंचे। But Kanan, one factor that we must just keep note is that Yes. both the teams have very good batting lineups. What about the bowling? What Yes. about the bowling of both the teams? I think bowling has been good. England, as I mentioned ago, before, I've seen through all the matches, they have got very good bowlers. They've got good depth. So much so that someone like Moeen Ali is just bowling. You've got Adil Rashid. And if you compare, the way English bowlers have performed, Virat Kohli has struggling against the English players. And if you're talking about the bowlers from India, they are playing with a lot of passion, with a lot of motivation. Yes, Shami movie season starts, but Arshdeep has been the fun. Because Asia Cup one match he got hit. After that, he has bowled in the death beautifully. You have two different mold. The experience of Ashwin cannot be ignored. And well, I think this is the best combination. And we are not going to discount the role by the man in form, Hardik Pandya. Yes, we'll come back to that discussion. But अभी हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर है इस समय। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी मैं किरण नवगिरे बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र औरंगाबाद से। वेलकम टू आवर शो किरण जी, क्या कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आप? जी आज तो इंडिया जीत जाएगी, लेकिन आज रोहित शर्मा का बल्ला चलना चाहिए और ओपनिंग तो साझेदारी है वो शतकी होनी चाहिए आज। चलिए, आपने जो बात कही है उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये पूरी हो जाए। रोहित शर्मा के बल्ले से रन्स बनने चाहिए, निकलने चाहिए, वो बातचीत तो हम कर ही रहे थे। एंड ही आल्सो वांटेड दैट द ओपन पार्टनरशिप शुड बी एटलीस्ट ऑफ 100 रन्स विद अस। एंड एक हमारे साथ इस समय कॉलर महावीर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी आप हमसे पूछिए सर, क्या आप जानना चाह रहे हैं या अपनी राय देना चाह रहे हैं? इंडिया जीतेगा और के राहुल शतक मारेगा। इंडिया जीतेगा और केएल राहुल शतक। पहले हमारे जो श्रोता थे महाराष्ट्र, उन्होंने कहा कि आज रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा। तो अगर ये दोनों हो जाते हैं तो फिर भारत को जो पिछले कॉलर थे जो 200 रन की मांग कर रहे थे बारिया जी, वो भी हासिल हो जाते हैं। I think they are talking about yesterday's match, Babar Azam and Rizwan. From there they want that momentum because Mahabi, they were not performing. Opening order Pakistan was not clicking. So that is what they're hoping for, because you've got the invitation to bat, so you have to do it. Right. There's no excuse. True. And I have one question बट्टू जी के लिए कि हम विराट कोहली की भी बात कर रहे थे, नाम उठाए थे कनन, जब बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या should also play the crucial innings today. For our listeners also, he's just short of 42 runs to reach the 4,000 run target in T20s, and वो पहले ऐसे बल्लेबाज बनेंगे who's going to make 4,000 runs, the quickest in T20s. Of course प्लेयर्स के लिए फर्क नहीं पड़ता है, बट बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है ये। देखिए साक्षी, जब इतना बड़ा मैच और इतने बड़े टूर्नामेंट में शायद ये रिकॉर्ड्स मायने प्लेयर्स के लिए, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है विराट कोहली को मालूम भी नहीं होगा, ये बाद में ही कई चीजें पता लगती हैं। इस टाइम तो पूरा फोकस जो है विराट कोहली का इस मैच में अपनी भूमिका निभाएं, और जैसा उन्होंने पहले मैच से शुरुआत किया और इस टूर्नामेंट में खेलते आ रहे हैं, अगर वो आज ऐसा खेल गए तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल निकाल देगा। जी Kanan ji, one question that I want to take forward from where you stopped last time is Hardik Pandya. If Rishabh Pant is playing, he goes to number 6 position and may not get enough chance to show what he can exactly do. I think the captain is in the best decision. It's depending upon the situation. Hardik, obviously, you feel there's a greater stability factor. But yeah, if you got just about 10 balls or 12 balls and Rishabh is going to come up, he's going to throw his bat. Don't forget, square of the wicket. The boundary is small, and that's why he's been included. And Bantu mentioned about DK's love. It has not been really up to the standard of taking good catches or affecting stumping. So that's, I think, Rishabh Pant, he's your boy for the future. After this particular World Cup, you're going to New Zealand. He's your vice captain. So I think it's a very clear-cut planning which lies ahead. But lower down, why should we talk about? Your listener is talking about 100 partnership at the top. So let's leave out 6 and 7 for the moment. Yes, of course. हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय दोनों ही टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं और नेशनल एंथम्स चल रहे हैं एक एक करके दोनों ही टीम्स के। एंड नाउ आई कम टू यू बंटू जी, मैं ये पूछूंगी कि इंग्लैंड के एंगल से अगर हम थोड़ी बात करें तो उनके मिडिल ऑर्डर उनका एक कंसर्न रहा है, एंड दे नीड टू गेट आउट ऑफ दैट वेरी क्विकली।
today might be the day when we'll see the change, middle order stepping up? देखिए नया प्लेयर भी आया उनके पास और मिडिल ऑर्डर के, लेकिन वो देखिए सारा बैंक कर रहे हैं ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर। और ये मैं जहां तक समझता हूँ इस मैच में जौन सी टीम ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा दे जाएगी, दोनों ही ओपनर्स भारत के भी और इंग्लैंड के भी, जैसे आप कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर की, जैसे कनन ने कहा कि उनकी हम बात ही क्यों करें अगर उनकी बारी ही ना आए, क्योंकि हम इस फ्लैट पिच लग रहा है जैसे बोला जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा रन स्कोरिंग विकेट है, तो कहीं ना कहीं इसमें ओपनर्स अगर चल गए तो जिस टीम को चल गए वो चल ही गए। जी बिल्कुल, जिस टीम के ओपनर्स चलेंगे वो टीम भी चल पड़ेगी मेलबर्न की तरफ, जहां पर फाइनल मुकाबला है। और उम्मीद तो यही है, और दर्शकों और सबकी दुआएं भी यही हैं कि भारत आज का मुकाबला जीते और भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया कनन जी आपका और बंटू सिंह जी आपका कि इससे पहले का जो हमारा खास शो है उसमें आप लोग आए, आपने दर्शकों के जवाब सवालों के जवाब भी दिए और अपनी एक्सपर्ट्स राय भी रखी। थैंक यू। फर्स्ट बॉल 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। Audaciously lost this one, which is taken on Kohli, and that ball has been sent racing to the fence for a spectacular six. Of the nation, All India Radio brings you live action of T20 World Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Network, primary channels LRS, FM relay stations DRM and DTH. All other matches on LRS, FM relay stations DRM and DTH. So don't forget, just tune into All India Radio for the live action of T20 World Cup. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ अंग्रेजी में कमेंट्री कर रहे हैं सुनील गुप्ता, स्कोरर है जतिन सूद और स्टेटिस्टिशियन मनोज कुमार। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि आज का मैच कितना महत्वपूर्ण है। ये कोई मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, ये विश्व कप का सेमीफाइनल का मुकाबला है, जिसके लिए टीमें बड़ी जतन के साथ तैयारियां करती हैं। रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं और अब यहाँ पर हम केएल राहुल और रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। आश्चर्य हुआ हमें, क्योंकि अब तक यहाँ ये हो रहा था कि जो टीम टॉस जीतती थी वो बल्लेबाजी करती थी, लेकिन बिल्कुल इसके उलट हमने देखा कि बटलर जो कप्तान है इंग्लैंड टीम के, उन्होंने खिला लिया है भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन दिख रहा है योजना के दृष्टिकोण से। और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन मैदान पर जा चुके हैं। मेरे साथ कमेंट्री में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट सुनील गुप्ता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड अब दोनों टीमें जबरदस्त प्रदर्शन करती रही और बहुत बढ़िया मुकाबला होने जा रहा है। Yes, thank you very much, Sushil, and welcome to all our listeners across the globe, especially in India, afternoon here in India. And the intriguing thing about games at the Adelaide Oval, Sushil, and I don't know whether you knew this, but Jatin said this across to me, that no team that wins the toss has actually gone ahead to win the game at the Adelaide Oval. So that's a very interesting, of course, that's all history, because it's a new game, it's a new evening actually in Adelaide. And I think the intriguing part about this is the teams India making one change in the team. In Rishabh Pant is in and Dinesh Karthik is out. And England making a couple of changes. Philip Salt is in David Malan, and Chris Jordan is in place of Mark Wood. So that's an interesting change, because Wood, of course, one of the biggest bowlers in the world. So it'll be interesting to see what Joss Butler's tactics are going to be right up front, Sushilji. Because at the end of the day, as they say, you have runs on the board and you put the pressure on. But yesterday that was not the case, because Pakistan, I beg your pardon, New Zealand put on just 150 odd, and Pakistan chased that down with relative ease. So it's not just a question of what runs on the board, but how many runs, and also in the manner in which you put them on. So always the start is important. Yes, New Zealand subsided 40 odd for 3,
to my mind, that was the game really gone. So it'll be interesting to see how Rohit and Rahul, the two R, actually perform for India on this biggest stage, as you mentioned. और जो अंपायर है कुमार धर्मसेना, जो कि 41वां T20 टूर्नामेंट कर रहे हैं, काफी अनुभवी अंपायर। और दूसरे अंपायर हैं पॉल रेफन, जो कि 27वां T20 इंटरनेशनल अंपायर कर रहे हैं। तो ये खेल शुरू होने जा रहा है, रोमांच बढ़ता जा रहा है। दिल थाम कर बैठिए, भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल का मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इसका मतलब ये कि पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट उखाड़ने की भी कोशिश करेंगे, तभी तो आपका ये फैसला सही साबित होगा। लेकिन दूसरे सिरे पर अगर भारत इस प्रयास को असफल कर देता है तो ये फैसला उल्टा पड़ जाएगा और मैच शुरू होने के लिए पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है। ये मामूली मुकाबला नहीं, ये गिल्ली डंडे का मुकाबला भी नहीं है, ये T20 का वर्ल्ड चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला है। पहली गेंद स्टोक्स की और ऑफ स्टंप के बाहर और स्लैश किया ऑफ साइड में डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 4 रन के लिए। क्या जबरदस्त शुरुआत और बहुत ही कमजोर गेंद, हाथ चलाने के लिए मौका, शॉर्ट पिच की ऑफ स्टंप के बाहर। और केएल राहुल तो इस तरह की गेंद का इंतजार ही कर रहे थे, बाहर की तरफ जरूर निकली थी लेकिन काफी विड्थ जिसको कहते हैं, जगह काफी दे दी और बैकफुट पर जाकर जानबूझकर उस जगह खेला जहां पे कोई फील्डर नहीं था। 4 रन उस पर इर्द गिर्द बिल्कुल लिखे हुए थे। अच्छी शुरुआत भारत की। अभी तो गेंद है स्टोक्स की, दूसरी गेंद थोड़ी फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ और बैकफुट पर जाकर इस बार केवल ऑफ साइड पे अच्छा किया, ताकत नहीं लगा रहे, इस बार टाइमिंग पर ही भरोसा किया, 1 रन और दे दिया। अभी अभी चौका पड़ा था, अभी अभी जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है, पारी को संभालना है, संवारना है। और शुरुआत में 6 ओवर में पावर प्ले में आप किस तरह से खेलते हैं, इसका कुछ असर खेल के पड़ता है। हम जानते हैं पावर प्ले में अगर आपने विकेट नहीं खोया, 50 रन बना लिए तो आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। Intriguing to see Ben Stokes actually opening bowling. I can't recall the last time he opened bowling for England in a T20. Immediate swing there, Sushil, and that's one of the reasons. He pitches the ball up, gets swing, there's a slip in place. I think that is the strategy that Joss Butler is adopting. बिल्कुल, और गेंद स्विंग हो रही है। ये ऑस्ट्रेलिया में इतनी अजीब बात देखने को मिली। हम साधारणतः वहाँ जो क्रिकेट होता है वो दिसंबर के महीने में होता है और दिसंबर के महीने में हम देखते हैं कि गेंद इतनी स्विंग नहीं होती, टप्पा खाकर ऊंची जरूर आती है, उछाल में। लेकिन यहाँ अक्टूबर नवंबर में हम देख रहे हैं मौसम बदला हुआ है और स्विंग हो रही है। और ये ओवर पिच से और ऑफ स्टंप पर पुश किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ मिड ऑफ से आकर गेंद को किया, 1 रन फिर भी लेने का मौका मिल गया। तो राहुल खेल रहे हैं 5 रन पर, रोहित ने भी अपने रन बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो पहले ही ओवर चल रहा है और भारत को इसीलिए हम देख रहे थे कि जब भारत बॉलिंग करता है ना तब काफी स्विंग मिलता है। और हमने देखा भुवनेश्वर कुमार और हर्षदीप सिंह जिस तरह से स्विंग करा रहे थे पिछले मैचों में, उसने में डाल दिया तो दुनिया भर के मशहूर बल्लेबाजों। अगली गेंद ये सीधी रह गई, ये बहुत बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के कुछ ही बाहर थी और खेलने के लिए मजबूर किया राहुल को उन्होंने। स्टोक्स दिखने में मासूम दिखते हैं लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं और लगातार कभी सीम पर पिच कराते हैं। इस बार सीम के सहारे गेंद बाहर की तरफ निकली, हल्की ज्यादा तो नहीं और लगभग लाइन ही जिसको कहते हैं ना, इट हेल्ड इट्स लाइन, अपनी लाइन पर ही कायम रही। When he was pushing away from the bowling, I think he go for a stroke, but just let the ball go. He's pushing away. This is not this match, it's a T20 game. इस बार स्विंग को नियंत्रित करके खेला मिड ऑफ की तरफ, उनको मालूम था कि आउट स्विंगर है तो ऑफ साइड खेला पहले ओवर की समाप्ति। So 6 for no loss. India, decent start. 4 of the first delivery that was wide and slashed away the point 4 by Rahul. And as Jatin reminded me, Sushil, that yesterday also for the first ball, but then there was an appeal for every W, which was pulled out because of DLS, and then because of the DRS, and then the third delivery, of course, it was palpably out, playing across the line, Finn Allen against Shaheen Shah Afridi.
No such alarms for India so far, 6 without loss. I think one of the keys in this game, in any T20 game, is the running between the wickets. And I think that that's one of the areas perhaps that the Indian openers have been watching. Because at the end of the day, every run counts. We've seen how many times games are decided by 1, 2, 3 runs. And that is so critical. We saw Sri Lanka in the Asia Cup, how well they ran between the wickets. And yesterday, New Zealand, 21 twos and 49 singles. Now, yes, that's important and that's a very good stat. Thanks, Jatin. But at the end of the day, you ended up with only 152, right? So the boundaries are as important. That's what Pakistan was absolutely capable of keeping this one on the pads and played away down to a wideish mid-on, as it is Rohit now on strike. So we've got 2 swing bowlers on right at the top. And remember, Mark Wood isn't playing today, so it's going to be Chris Jordan who's going to be doing the at the back end of the innings along with Sam Curran. I think Sam Curran is a much improved bowler, left arm. He has a lot of variety in his bowling, and he has been one of the most economical bowlers in the T20 World Cup so far. So 6 without loss, and I think just one of those tantalizing moments in the game. This one that's played away down towards deep mid wicket. The ball's running away towards the boundary, but there is a man stationed at deep square leg. Runs across, keeps the scoring down to 2, and goes on to 3. India 8 without loss. And I think, Sushil, the point about this whole thing is looking for the opportunities. That shot that you were describing when Rahul pushed forward the ball outside the off stump, there's no need for that. Because, as I said, it's not a mismatch, right? And the ball was not doing anything. And that is the one thing, those little lapses of concentration that can be your undoing. This one, once again, on the pads and paired away slightly straighter towards deepest mid-wicket. This time, just the one for Rohit. Move to 4, and Rahul on 5 will now take strike. 9 without loss are India. Remember, England winning the toss and putting India into bat. And as we heard at the toss, it's a cool evening. No chance of rain, or at least no threat of rain immediately. And a lot of swing on offer. We saw Ben Stokes swinging the ball, and we've seen Chris Wood. He is a swinger, a guy who gets the ball to swing quite prolifically. As we see now, Rahul surveying the field, looking at where the fielders are positioned. As here goes Brooks. Longish run up, comes in and bowls. That's a slightly short of length and pushed away outside the body and out, caught behind. There, and Chris Wood strikes first, and exactly the point that you were making. Early wickets are going to be the undoing, and this will be one of the themes of the Indian batting so far in the T20 World Cup. बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आपने देखा कि राहुल साधारणतः शुरुआत जब करते हैं उनके पैर का मूवमेंट वैसा होता है नहीं, ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर और गेंद के पीछे आने के बजाय अपनी जगह खड़े खड़े उन्होंने उसे पुश करने की कोशिश की। बाहरी किनारा लगा और सीधी विकेट कीपर के ग्लव में पहला विकेट गिर गया। अच्छी शुरुआत नहीं रही भारत के लिए, दिन के लिए बढ़िया शुरुआत। 5 पर आउट हुए राहुल, तो भारत शुरुआत से दबाव में पड़ गया है। Yeah, again, you see, he put a little more shoulder into that ball, a little bit more than he thought it would, Rahul. He couldn't get his bat out of the way, tried to guide it down to towards third man, and Jos Butler had to leap to his right and high to pick up that ball. But at the end of the day, a very good wicket, because all the balls so far have been length and moving way outside the off stump or on the pads, slightly shorter and rose a bit more than Rahul expected. But there you are, you've got to outthink the batsman, and that's exactly what Chris Woakes did. So again, Virat Kohli, who's been the talk of the tournament, is this one is played away very nicely off his toes, straight to the mid-on, picked up by Jordan, and then practices the shot that he would like to have played with that delivery. And you can see that replay of shortest delivery we've seen so far. Couldn't get his back over the ball, and Jos Butler taking a very good catch, leaping away to his right like the goalkeeper, and KL Rahul back in the hutch for India. Not the best start you would say for India, but exactly what you were saying. You put India in, picking up at least 2 wickets in the power play. One's down, next one is played away just short of Jordan by Virat Kohli. He picks up his first run. At the end of 2 overs then, India 10 for the loss of 1 wicket.
Virat on 1 and Rohit Sharma the other on 4. 10 रन बने हैं। शुरुआत काफी सहमी हुई नजर आ रही है। देखिए शुरुआत के पावर प्ले का वक्त है और आप एक विकेट जल्दी खो देते हैं जिसकी कि काफी अंदेशा था कि भारतीय ओपनिंग जोड़ी एक बड़ी भागीदारी जमाने में असफल हो रही है। हमने देखा इस पूरे विश्व कप में ये भारत की एक समस्या रही, लेकिन इस बार भी ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है और इसमें अगर केएल राहुल का विकेट गलती से गिर गया तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर से एक भागीदारी जमानी पड़ेगी। जो नुकसान हुआ उसकी मरम्मत का कार्य करने की कोशिश करनी पड़ेगी और भारतीय टीम ये प्रयास करना पड़ेगा। विराट कोहली आए हैं जिनके बारे में जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्रिकेट एक गेंद का खेल है और वो गेंद बन जाती आप कह नहीं सकते। आप पर दबाव है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विराट कोहली इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं और उनके सामने रोहित शर्मा है जिनका बल्ला बहुत दिनों से चल नहीं रहा, लेकिन ये कोहली सामना कर रहे हैं। खूबसूरत ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकाली। परिवर्तन के तौर पर करण को बॉलिंग गया है और आते ही उन्होंने प्रभाव जमाया। लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने विराट कोहली को थोड़ी परेशानी होती है और इनका पीछा करने की कोशिश की थी, बाहर की तरफ निकले के सहारे कट होकर और गेंद को बहुत ही लेंथ पर रख रहे हैं, बिल्कुल सही इलाके में पिच कर रहे हैं। ये उनकी विशेषता है करण की। विराट कोहली जो अब तक अच्छे फॉर्म में है, यहाँ पर एक बार फिर से उसकी अपेक्षा बाहरी किनारा लगा, बहुत ही किस्मत वाले रहे, पहले स्लिप के आगे की तरफ गिर गई। ये बहुत ही नर्वस तरीके का स्ट्रोक था, ये न पीछे आए, केवल बल्ला अड़ा दिया। आश्चर्य हुआ मुझे इस तरह से खेले। Once again, there was a little more bounce there from Sam Curran. Now he's not as quick as Chris Wokes or as Ben Stokes, and that's why the ball looped in the end, dropped just in front of Moeen Ali at slip, but so lucky. Twice he's been flirting outside the off stump, once to get the nick, once got the nick and dropped short. Let's see what happens with the This one is just batted away just to left of point and picks up a single, gets himself off strike. I think what we've seen so far has not really given the Indian fans there too much confidence that the Indian batsmen have been playing, except for that first delivery, which was hit away for 4, and that was wide outside the off stump, deserved to be hit. I think England have had slightly the upper hand in the way that they've been bowling, and the Indians have been batting. We've seen so many plays and misses outside the off stump. Does not look good so far. और जैसे कि हमने पहले भी देखा था, उछाल भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। स्विंग को तो वो सामना कर सकते हैं, लेकिन उछाल में मुश्किल पड़ती है। ऑफ साइड में खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ बिना किसी रन के, और रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, निगाहें उनके ऊपर है, वो कप्तान है टीम के। अभी तक उस तरह की बल्लेबाजी कर नहीं पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मौका है। और किंग कोहली, लोग यहाँ पर काफी बैठे हुए हैं और किंग कोहली लिखकर बैठे हैं। लोग चाहते हैं एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन करें। ये अगले गेंद की और बिल्कुल ऑफर मिडल स्टंप पर बहुत ही अच्छी जगह पर वो गेंद को पिच करा रहे हैं और रन बनने की संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। हाथ चलाने के लिए जगह नहीं दे रहे। देखिए T20 क्रिकेट में ये बहुत जरूरी होता है। और सेमीफाइनल और फाइनल में विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है, 72 रन बनाए थे 2014 में नॉट आउट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, सेमीफाइनल श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 77 रन बनाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप 2016 में 41 रन बनाए थे। और यहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, अपील जोरदार लेग बिफोर की, नॉट आउट कहा अंपायर ने। धर्मसेना अंपायर है और ये DRS टाइमर शुरू हो रहा है। आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन DRS नहीं लिया, शायद के बाहर टप्पा खाई थी, अन्यथा बीट पूरी तरह से हो गए। Yes, it was slower than he expected, Rohit Sharma, and he was through the shot before the ball came onto his pads. I think it was a little high as well, and there was absolutely, I think, no doubt in Dharmasena's mind that that ball was going to miss the stumps. Once again, just the one run in the third over of the power play. India are at 11 for 1, going at 1 runs and over, and certainly now England have got one on the throat of India so far, because the way that India have been playing, it's not just the runs, the way that India have been playing has actually displayed a lack of confidence in their abilities. Now, one of the things that you need to do, Sushil, in a situation like this, is take the attack to the bowlers. You've got to be able to say, we're going to impose ourselves upon you, put the pressure back on England. Right now, England have put the pressure solely, completely on India.
बिल्कुल, अभी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा समय गुजारने की जरूरत है। जब विकेट पर समय गुजारते हैं, पिच से उछाल और रफ्तार का जायजा होता है, और इस बार उठा दिया है ऑफ साइड में कोहली ने खूबसूरती के साथ 6 रन के लिए कवर के ऊपर से। क्या बढ़िया स्ट्रोक थे, जितनी प्रशंसा की जाए कम। ये कहते हैं ना कि आप कहीं भी रहते हैं कि विरोधी के खेमे में भगदड़ मचाने की कोशिश करनी चाहिए और आक्रमण को विरोधी की गली में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। वही किया, आगे निकले और उठाया। बॉटम हैंड का बहुत ही खूबसूरत उपयोग और कब ऊपर से देखते ही देखते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। Thank you for describing so well that first delivery of the fourth over. India then moving on 17 for 1. Exactly what I had said needed to be done. This time slightly short of length. Played away square of the wicket, going away down towards deep backward square leg. Just for the single. Thought about 2, but in quickly off the boundary was the fielder and kept the scoring 1. So Virat moves on to 9. That was an excellent shot. Going onto the back foot and then forward and lofting the ball, as we've seen so often during the course of this tournament. Extension of the arms and over extra cover for 6. That's the type of thing that you have to do. You'll put the pressure back on England. First 3 overs, I would say, were completely England. And now India 18 for 1. We're in the 4th over already. So remember, just 2 more overs of the power play after this. And it remains to be seen how India attempt those. This one played away off his pads. Once again, very ungainly looking shot there from Rohit Sharma, who's normally so elegant in the way that he bats and really has more talent, I think, inborn talent than most batsmen across the world. That he's been woefully out of form. Here's a good chance for him to find it. India moving on to 19 for 1 with that single. And will be Chris Woakes now. The Adelaide Oval filling up, and of course it's a sea of blue. Whenever India play any part of the world, you will find a sea of blue. Here goes Woakes then. And he is bowling to Kohli, and Kohli dabs that away towards short mid wicket, picked up by Jordan, and there is no run. He's on 9, so no Indian batsmen so far coming at the end of the 4th over have reached double figures, and then haven't reached the 20s, so really going behind the 8 ball, as you can see, as you can understand. The loss of KL Rahul in the 2nd over, bowled by Chris Woakes, I think put India on the back foot firmly. And now it's time for Virat and Rohit, 2 of the most experienced batsmen in the world in any format, to take the attack to England. Here goes Woakes, comes in and bowls, and this one wide on the leg side will be called a wide. Yes, and India tick on. That's the first extra, if I can recall. Yes, thanks, Jatin. So that's the other thing, Sushil. The importance of not allowing too many extras in a game. As we've seen, there are fine margins in some of the results in this particular World Cup. And Virat Kohli, of course, going from strength to strength in all the records that he's been making. Got a very interesting stat here from Manoj Kumar. Rahul in T20 World Cups versus top-ranked teams. Let's come back on that. There goes Woakes. And this one is played away. It was a slow delivery, played away quietly off his pads down to deep mid wicket. And they pick up his single. Finally into double figures is an Indian batsman. Virat is on 10, India on 21 for 1. And no bowling extras by Pakistan yesterday. So really a disciplined command performance yesterday. That's what I think we will see. And we'll bring some interesting stats to you about what happened in 1992 in the same venue, Australia for Pakistan. But we shall now wait for the next delivery from Woakes. And this one tries to get onto his knee and pull that ball. Once again, the slightly slow delivery gets the bottom of the bat. Very lucky there, because if it hit the pads, I think he might have been well on the way back to the pavilion. The stat I wanted to read out just got from Manoj Kumar. Rahul in T20 World Cup versus top-ranked teams. 3 versus Pakistan in Dubai, 18 versus New Zealand in Dubai, 4 versus Pakistan in Melbourne, 9 versus South Africa at Perth, and 5 versus England today at Adelaide. So you can just, he's not the man who's really making the mark for in the semi-finals. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. अब 21 रन विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। रनों की रफ्तार अभी कम है। करण बॉलिंग कर रहे हैं और ये थोड़ी शॉर्ट थी। बैकफुट पर जाकर कलाई का उपयोग किया। मिड विकेट विराट कोहली 11 रन पर खेल रहे हैं और
ऐसे खिलाड़ी हैं कि बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहते। उनकी कोशिश रहती है कि वो आक्रमण को विरोधी की गली में या उसके खेमे में ले जाकर धकेल दे। और वैसे भी देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और सुरेश रैना इससे 4 भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाए। ओवर पिच थी, कलाई का उपयोग किया और ऑन साइड में मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन। क्या बढ़िया स्ट्रोक है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, और ये इसको बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत विश्वास देगा रोहित शर्मा को, और भारतीय तिरंगे झंडे सभी दूर लहराते हुए देखे जा सकते हैं। Say that Rohit needs a release shot. He's been really playing well with it, and this too, his bat twisting in his hand, but able to get it over Chris Wokes there at mid wicket and down the boundary for 4. So it was not perhaps the best shot, but I think something that will ease his mind. Moves on to India 26 for 1. इस बार आगे निकल कर आए और इस बार बहुत ही किस्मत वाले, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं प्री डिटरमिन्ड शॉट। पहले मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से काफी देर तक हवा में थी, मिड विकेट पर फील्डर था, मिड ऑन पर फील्डर था, लेकिन ये गेंद दोनों के बीच में से और थोड़ी ऊपर की तरफ भी चली गई, फिर चला। I think it was an excellent shot, really. Now this one was in control. He knew what he wanted to do. Yes, it was speed term. He knew what he wanted to do and was able to execute. And I thought that was really well done. I think, as I said, the earlier one was his release shot. Just opened up his mind. I think hopefully for India's sake, you'll see a different Rohit Sharma. This one slashed away down towards deep point in the air and parried away by the man at deep point in the air. It could have been a catch, but it would have been a magnificent catch had it been taken by Happy Brook fielding at point. Nevertheless, it is a life, a half life, I would say quarter life for Rohit Sharma, because it was hit with absolute venom and diving way to his right leg. He parried the ball, as you would say, around the bar and stopped 4 runs. That much I'll say. If he did take the catch, it was an excellent effort there. But you can see Rohit Sharma now is on the attack, and I think that's absolutely the right way for him to go. लेकिन खुद ही वो कहते मान लो कि वो ठीक नहीं हो रहा, और यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर निश्चित रूप से, हालांकि अपील जरूर की कुर्रन ने ये, और कोहली पैड पर लगी, हालांकि रहे हैं अब, लेकिन आत्मविश्वास नहीं दिखाते। DRS टाइमर शुरू हो गया है, इनकी बर्बाद कर रहे हैं, और अब लगता नहीं कि DRS दिया जा सकेगा, लेकिन नहीं लिया, और ये गेंद निश्चित रूप से लेग के बाहर थी, और इसी कारण विकेट कीपर सही व्यक्ति होता है जो इसकी पहचान कर लेता है कि लाइन क्या थी गेंद की, क्या स्टंप्स की लाइन में गेंद पड़ी थी, और करण ने भी इशारा किया कि नहीं भाई, शायद ये लेग स्टंप के बाहर था, और विराट कोहली भी आश्चर्य के साथ देख रहे, अगली गेंद ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, और हल्का सा बैक का मुंह खोला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला। 5 ओवर समाप्त हुए, 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर भारत, जबकि टॉस जीता था इंग्लैंड ने, और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। Yeah, it was a slow delivery. That's what beat Virat Kohli. We've seen a couple of slow ones already from Chris Wokes and Sam Curran as he tried to play onto the onside. It was well outside the leg stump, so there was really no issue. Last 2 overs, of course, India now have picked up 20 runs, so really getting a move on. So 2 excellent boundaries in the previous over from Rohit Sharma. The interesting thing about Pakistan and the 92 World Cup, there's so many parallels with what is taking place right now in the 2022 T20 World Cup. Of course, the 1992 World Cup was the 50-over format. In league phase, Pakistan lost to the West Indies in Melbourne by 10 wickets, then beat Zimbabwe by 53 runs. No result versus England, and they were all out for 74 in that particular game. Lost to India by 43 runs, lost to South Africa by 20 runs, then beat Australia, beat Sri Lanka, and then of course it was history, beating New Zealand in the semi-final. The next one has been clubbed away by Rohit Sharma over the square leg field, over the square leg umpire, with Adil Rashid now coming into the attack to spin for the first time in the power play, and 4 runs. So Rohit Sharma, as I said, really on the attack. The slog sweep over the square leg umpire, nobody there at deep backward square leg. Remember, only 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. There was none behind square on the onside. So 4 runs. 35 for 1 is India. The next one again swept, but this time it was a slow delivery, just 87 clicks, and stopped well by Sam and diving way to his right. It wasn't in the air, it was all along the ground,
but having to dive away and stop that ball, I thought that was a very, very good stop. And just coming back to Pakistan and beat New Zealand at Christchurch by 7 wickets. That's what they did yesterday. And this one is the googly and off the back foot, but straight to Moeen Ali at extra cover by Rohit, and there is no run. So the issue is that you've got the 4. Now, are you able to keep the momentum going by picking up a few singles? The next 2 deliveries dot balls, and that's what India have to try and eliminate from their game, the amount of dot balls that they play. This one is driven up to long off quietly, and they literally stroll a single as India move on to 36 for 1. Rohit is on 19, Virat on 11. After that magnificent 6 over extra cover, bowling of Chris Stokes now taken slightly a backseat to what Rohit Sharma has been doing. And here goes Adil. It's wide outside the off stump. Once again, the googly and played away off the back foot. Tried to hit it slightly squarer, but went straight to a long off. Picks up a single, moves on to 12. So a bit of a stop-start power play, Sushil, so far. 37 for 1, coming up to the last delivery of the power play. I think one of those psychological things is, can you get over 40 in the power play? It's not the best score, but you've only lost 1 wicket. So can India pick up those 3 or 4 runs to get them over 40 in the power play? One of those small things. This one again, in the air, he tried to drive it towards deep point. The ball again was googly. Past Rashid. I think that might have been a catch, Sushil. Particularly even Stevens in the power play so far. India 38 for 1, and only the 1 wicket, India will say, and only 38 runs, England will say. नहीं बिल्कुल, दोनों तरफ से एक तरह से मैं समझता हूँ फिर भी इंग्लैंड संतुष्ट होगा, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजों को रोक रखा है। ये बहुत ही तेज तर्राट बल्लेबाज हैं दोनों जो खेल रहे हैं इस समय के। केएल राहुल का विकेट जल्दी झटका लिया था, ये उनकी सफलता रही। और रोहित भी आत्मविश्वासी नजर नहीं आ रहे। उनके जो स्ट्रोक्स जरूर लगे, लेकिन वो पहले से पहले से सोच लेते हैं कि आगे बढ़कर मुझे मारना ही है, तो ऐसे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। तो इसमें कई बार जोखिम भी हो रहा और कई बार कैच भी, जैसे हमने देखा एक पॉइंट पर कैच के हाथ से चला गया था और वहां पर ब्रुक के हाथ से कैच छूट गया। और कोहली भी कुछ लगातार कोशिश कर आक्रामक स्ट्रोक्स खेलने की, वो ओवर बीतते जाते हैं। पहली गेंद तय ओवर की, ऑफ स्टंप के बाहर थे, लिविंगस्टन को लाया गया है, हर बार अदला बदली की जा रही है। और जो गूगली गेंद कहते हैं, इतनी स्पिन नहीं हो रही, हल्की से अंदर आई, उनकी गूगली उतनी स्पिन हो नहीं रही है। और इस बार लिविंगस्टन की एक गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पर थी और धीरे से पुश की ऑफ साइड में डीप मिड ऑफ की तरफ गेंद वहां पर फील्ड किया गया, 1 रन। और जो कैच की तरह चला गया था, सीधा बॉलर ने, हालांकि मिड ऑफ की तरफ जा रही थी, बॉलर ने बाईं तरफ डाइव करके उस कैच को लेने की कोशिश की थी विराट कोहली को। और इस बार फिर से बॉलर ने ऊपर से उठा दिया है 4 रन लिविंगस्टन की इस गेंद को। और कोहली जानते हैं कि एक ही तरीका है T20 क्रिकेट में कि आप अपने आक्रमण को प्रतिद्वंद्वी की गली में ले जाइए। और तमाम दर्शक जो यहाँ पर मौजूद है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, प्रसन्न हो गया है जिस तरह चौका लगा है। Yes, the good thing was they tried to hit it straight. Next one has been misfielded by Moeen Ali and extra cover, and they scrambled through for 2 before the man from long off pick up. The interesting thing, once again, that power play. Now, power play, remember, 6 overs you had, 6 deliveries, so 36 deliveries, out of which 17 deliveries were dots. That is almost 50% for dots. So that is something India have to look at in the larger context of playing T20 cricket. ये अगली गेंद थी, फ्लाइट किया था इस बार, कदमों का इस्तेमाल हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑन साइड में वाइड मिड ऑन की तरफ काफी डीप, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका ऑफ मिल गया। अब विराट कोहली पहुंचे 19, रोहित शर्मा खेल रहे हैं 21 रन पर और कुल स्कोर हो गया 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और काफी ज्यादा बाहर। विराट कोहली देख रहे हैं धर्मसेना की तरफ, भाई वाइड दी, लेकिन धर्मसेना ने तुरंत ही अपना मुंह हिला दिया कि वाइड नहीं दिए, और वाइड नहीं दिया गया और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर, ये है स्कोर। Yes, that was in the over that he let the ball go thinking it was wide. It was well inside those indicative lines that indicate a wide. But, and you could see Livingston actually smiling last week, saying, I fooled you, because he thought that was Rohit actually who left the ball low
thinking that it was going to be wide, but it wasn't. It was at least 6 inches inside the indicative line. So 2 deliveries that he could have perhaps gone after because they were wide, but left alone. Nevertheless, 46 for 1 then after 7 overs and 7 runs that go off that Adil Rashid. And it is going to be, it is Rashid once again. Was there, oh, that was Liam Livingston, of course, yes. So, I beg your pardon. Thank you, Jatin. Both leg spinners, that got me fooled a bit. And that was Livingston. Now Rashid in his second over, and the ball has been played away towards Lamar. So, India 47-1. It's been a steady start. There have been a couple of bright sparks in terms of boundaries hit by Rohit Sharma, and that 6 by Good afternoon. This is All India Radio. I'm Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Campaigning for Himachal Pradesh Assembly polls to end this evening. Notification for second phase of Gujarat Assembly elections issued. BJP releases first list of 160 candidates for the Gujarat Assembly elections. Threats of cyber and information warfare pose a big challenge to the security architecture, says Defence Minister Rajnath Singh. India joins Mangrove Alliance for Climate at the 27th session of the Conference of the Parties at Sharm el-Sheikh in Egypt. And in cricket, in the semi-final of T20 Cricket World Cup, match between India and England underway in Adelaide. And now the news in detail. Today is the last day of campaigning for assembly elections in Himachal Pradesh. Campaigning will end at 5 p.m. Star campaigners of all parties have been canvassing to garner votes for their candidates. Voting on all 68 assembly seats will be held on Saturday. Counting of votes will take place on 8th December. More from our correspondent. BJP National President Jagat Prakash Nadda, Union Home Minister and senior leaders Amit Shah, Anurag Singh Thakur and Smriti Irani are seeking votes in the name of development by addressing public meetings in favor of party candidates at many places on the last day of campaign today. Similarly, BJP rules state chief ministers and senior leaders Jairam Thakur, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami and ex-chief minister Professor Prem Kumar Dhumal are also throwing full force in promoting their candidates. On the other hand, the Congress is taking out Vijay Ashirwad rallies in all the 68 assembly constituencies. At Shilai in भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी जिंदगी के छुए पहलुओं के बारे में फिर विविध छुए पहलुओं के बारे में. With this, the process of nominations till 17th held on the 5th of December. In the phase, a total of 12 nomination papers were picked up in the state. जानते हैं कि उदित कर रही हैं रेडियो सखी ममता सिंह. इनके सुरों की बारिश. तो आइए सुने. बॉलिंग कर रहे हैं उसी तरह से बॉलिंग करें जहां फील्डर्स खड़े हैं और फील्डर्स भी जानते हैं कि यहीं पर आएगी. जॉर्डन को खिलाया गया है. जॉर्डन अब बॉलिंग के लिए आ रहे हैं. शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक आकर हेल्स ने उसे फील्ड किया. 1 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को. तो काफी ऐसे शॉट्स खेले गए जिसमें कई बार आउट होने का खतरा मंडराया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अभी तक एक ही विकेट खोया है. तो मैं समझ रहा हूँ इसमें भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है. कई बार फील्डर्स के हाथ भी लगे. एक बार लिविंगस्टन के हाथ के पास से निकल गई और एक बार विकेट कीपर के पास. और अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि किस तरह से शॉट थर्ड मैन पर फील्डर के कुछ ही आगे रोहित शर्मा को शॉट टॉप एज लगकर गिर गया था.
जॉर्डन की अगली गेंद थी ओवर पिच थी ऑफ स्टंप के बाहर और उठाया खूबसूरती के साथ, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। गेंद जैसे ही उनके बल्ले से टकराई 4 रन की जैसे उस पर छाप लगी थी। जानबूझकर उन्होंने बॉटम हैंड का उपयोग किया, नीचे खेलने की कोशिश ही नहीं की थी। उनके इलाके में गेंद पड़ी थी और भारतीय दर्शकों में खुशी का ठिकाना नहीं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन कमजोर गेंद। जॉर्डन एक कमजोर कड़ी मैं हमेशा मानता रहा हूं इस इंग्लैंड की टीम में, और चूंकि वुड इस मैच में नहीं खेल रहे, वो बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं, उन पर काफी आशा रहती थी इंग्लैंड को। और ये गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर, इस बार सही जगह पर उन्होंने गेंद को रखा। ऑफ और मिडिल स्टंप पर थे, गुड लेंथ के इलाके में, और बैट पैड एक लाइन में देकर रक्षात्मक तरीके से खेलने में सफल हुए, क्योंकि इस गेंद को हिट करना नामुमकिन सा था। जॉर्डन कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रन इतने न बने ताकि बैट्समैन अपने आप को स्वतंत्र या आजाद महसूस करने लगे। और जो फील्डर्स जमे गए हैं कि एक स्लिप, एक गली, एक थर्ड मैन, ये 3 फील्डर्स विकेट और पीछे की तरफ। और इस बार उन्होंने कोशिश की थी लेग साइड में हटने की ताकि ऑफ साइड में खेलने के लिए जगह बना रहे, लेकिन जॉर्डन ने बुद्धिमानी के साथ उनके पैड पर ही उनका पीछा करते हुए उसी तरफ गेंद कर दी और कुछ भी विशेष करने में सफल नहीं हुआ, केवल बॉलर की तरफ खेल पाए। और थोड़ी सी धीमी गेंद भी थी, अंदर की तरफ ले आया वो भी, तो ये चकमक आगे क्रीज के कोने से गेंद कर रहे हैं और काफी देर तक आगे भी बैट फील्डर के बिल्कुल आगे गिर गई। कैच भी हो सकता था कॉटन बॉल, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए बॉलर। अगली गेंद इस बार ऊंचा उठाकर मारा है, ऑन साइड में ऊंची चली गई, वहां पर फील्डर उसके नीचे है और आउट। ये बहुत देर से लग रहा था कि रोहित बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच नहीं ले जा रहे हैं और आखिर जॉर्डन को ये विकेट मिल गया। भारत का दूसरा विकेट गिर गया है। गेंद के पिच तक नहीं थे, ताकतवर शॉट मारने की कोशिश की थी, सिर ऊंचा चला गया। धीमी गेंद थी, एक बार फिर से धीमी गेंद का बहुत अच्छा मिश्रण अंदर की तरफ आ रही थी, सिर एकदम ऊंचा चला गया। गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच आई नहीं और लॉग ऑन पर सीधा कैच गया, जहां की कैच कर लिए गए और इस तरह ये दूसरा विकेट भारत का गिर गया। Yes, you could see it. He was woefully out of touch. There was Rohit Sharma. Once again, the slow delivery. By now, you've seen Ben. You've been there for over 8 overs. You can see the velocity of the delivery. As you said, his head went in the air, tried to slug it over deep mid wicket. There was a man right there. So they were able to think Rohit Sharma out. 2 drop deliveries before that. Said he's going to try and break free, and Sam Curran running forward, taking a diving catch to his in front of him actually, and a very, very good catch taken. So the pressure telling then on Rohit Sharma, and now the man of the moment, Sky, Surya Kumar Yadav coming in. But again, Sushil, you cannot have one man always saving you 60 or 20 odd deliveries, etc., etc., etc. There is a time, that he has to get a good foundation to be able to build. It's 56 for 2, and we're in the which over are we? We're in the 9th over. Right, coming up the last delivery of the 9th over, well behind the required rate to reach a score of around 175. और 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ऐसे समय में आए हैं सूर्य कुमार यादव, भारत को कई मौकों पर बचाकर आगे निकालने के लिए बहुत ही विख्यात है। सूर्या ये मिडिल लेग स्टंप पर थी और कलाई के उपयोग से फ्लिक किया ऑन साइड में, आते ही सुंदर स्ट्रोक, और कम से कम 2 रन यहाँ पर जरूर मिल सकते थे, लेकिन एक ही रन के साथ संतोष किया और उसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Yes, so if you look in the context of England winning the toss and sending India into bat, it really has been so far in the first 9 overs of this game. England's game, 57 for 2. India not being able to break free, just occasional flashes of brilliance. But Rohit Sharma, you said, really out of form. Rahul not maintaining the 250s, so the form that he showed in the previous 250s that he put up. It's now up to the 2 batsmen of the moment for India, and that is Virat Kohli and Surya Kumar Yadav, to not just steady the ship, but to take it to safer quarters, because now you have 11 overs, 66 deliveries. And to reach a score of about 170 odd, you've got to go at least 10 runs and over, and there have only been 2 overs so far in which 10 runs have been scored. That's the 3rd, 4th, and the 5th. After that, it's been... So look at the over rate so far in terms of runs. Just telling you, here goes Rashid into his 3rd over, and this one once again gets the outside edge, does Surya Kumar Yadav. The ball that was pitched on the leg stump and spinning back into him, and once again tentatively played by him.
So the overs have gone so far in terms of runs: 4, 1, 10, 10, 7, 8, 5, 6. The last over just 6 runs. And England will be much the happier team on the field right now, because I think that they have outthought the way that India have wanted to bat. And India has really, to be honest, have been quite tentative in the way that they've approached the game. A slip now in place. Very interesting. 10th over of the game. And this one is swept by Srinagar. But it was a full pitch right on the off stump and played away. Got bottom edge of the bat and went away towards deep mid wickets. Moves on to 2 of 3 deliveries. And India then, literally, as I said, labor on to 58 for 2. Since Jan 1, 2022, thank you, Manoj Kumar. I'll just come back to the stats. Slip in place now for Virat Kohli as well. Comes in and bowls, and this one is bunted in the air, deliberately in the air, down towards mid-off, and they're able to pick up 2 because it was played slowly enough, and 2 runs. So you've got to then change your game. If the ball is not coming onto the bat, and we've seen that so many slow deliveries by the England bowlers, then you've got to change your game and try and paste the ball into the gaps and pick up those 1 or 2 runs. 60 for 2 then, finally. India getting to the 60 mark. This one, once again, the slow ball hanging in the air there from Adil Rashid. And tried to hit the ball and found that it wasn't coming out. Just 75 kilometers an hour. So on a slow pitch, you bowl slower, the batsmen have to make all the pace. Here goes Adil Rashid. None for 15 in his 3rd over. Comes in and bowls, and that's a full toss and whacked away, but didn't get hold of it because he tried to hit it too hard. Virat Kohli could have hit it anywhere, hit it straight to long on, and that shows the mentality, how much pressure you're under, because that ball should have been deposited in the stands. But he got a bottom edge because he tried to hit it too hard. No timing, just the single. England will be a very happy team at this halfway mark, coming up 61 for 2. Since January 1st, the beginning of this year, break off the last ball of this 10th over. Here goes Rashid, comes in both, that's slightly short of length and driven away slightly in the air towards deep cover by Srinagar. No boundaries so far in this over as well. 62 for 2. Kohli and Srinagar have batted together in 10 innings and collected 510 runs at an average of 72 with 2 centuries and 2 50s partnerships. Thank you, Manoj. Now, as you can see, this is the critical partnership for India going forward, Sushil ji. 10 ओवर्स पूरे हो चुके हैं और 62 रन केवल बने हैं। इसका मतलब साफ है कि काफी दबाव में भारतीय पारी आ गई है और इसका एक कारण ये भी है कि इंग्लैंड ने जो बॉलिंग की है और जो योजनाएं बनाई, इतनी कारगर तरीके से उसको अमली जामा पहना रहे हैं मैदान पर कि भारतीय बल्लेबाजों को कुछ सूझ नहीं पड़ रही है। फिलहाल तो उतने रन बन नहीं पा रहे हैं और न केवल तेज गेंदबाज बल्कि स्पिनर ने भी अपना शिकंजा बराबर कसा हुआ है और ये अच्छा लग रहा है देखकर कि ये देखिए, कहते हैं कि एडिलेड का मैदान जो है वो स्पिनर्स के लिए फायदेमंद रहता है। यहाँ स्पिनर्स को मदद मिलती है। हालांकि गेंद उतनी स्पिन तो नहीं हो रही, लेकिन आदिल रशीद के बारे में कहना चाहूंगा कि धीमी गेंदें कर रहे हैं। 60 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार गेंद को फ्लाइट दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, विविधता भर रहे हैं। कभी गूगली करते हैं, कभी टॉप स्पिनर करते हैं, कभी फ्लिपर करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सही इलाकों में गेंद वो थोड़ा ड्रिफ्ट मिलता दिख रहा है। ये जब खास करके जब वो काफी धीमी गेंद करते हैं, उनकी गेंदों में एक ड्रिफ्ट, और इसीलिए हम देख रहे हैं, जब भी हमने देखा कि तो चाहे सूर्य कुमार यादव भी उतना आत्मविश्वासी नजर नहीं आ रहे उनके सामने। मुझे देखकर थोड़ी हैरत हुई, शायद सूर्य कुमार यादव को तेज गति से जो गेंद उनके बल्ले पर आती है उसको देखकर ज्यादा आनंद आता है और धीमे गेंदबाजों को मारने में शायद उतना उनको कठिनाई, लेकिन बॉलिंग भी बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ हो रही, इसमें भी कोई संदेह नहीं। Yeah, absolutely, and I think one of the things is exactly the stat that Manoj Kumar actually gave, which is that they realize that this is the partnership. They realize how many runs and how critical they are for the Indian effort. Tell you the bowling analysis so far. Ben Stokes opened the bowling, 6 runs, no wicket. Chris Woakes, 2 overs, 1 for 14. Sam Curran, 2 overs, none for 11. Adil Rashid, 3 overs, none for 17. And Liam Livingstone, 1 over for 8 runs. Nobody's gone for big runs. Just the 1-6 and 3 boundaries in the innings so far in 10 overs. And this is 10 overs of a World Cup semi-final T20, and you've just had this number of boundaries. 3 4s and 1-6. Normally, at least 1 and over should be the average going forward, which means to redress that balance, they've got to score at least now, I would say,
12 to 15 runs per over at the back end of this innings to get India anywhere near somewhere around the 175-180 mark. देखिए, आप कितना भी सोचते हो कि 170 रन बच जाएंगे, 180 रन बच जाएंगे, लेकिन ये काम करना तो आपको ही है। और वहां पर मैदान पर चुनौतियां बहुत अलग तरह की है। शुरू से भारतीय पारी दबाव में पड़ गई। जब से पहला विकेट गिरा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब पावर प्ले में जल्दी से अगर आपके ऊपर विकेट गिर जाए, तो फिर आपको हमेशा दबाव में रहना पड़ता है और उससे छिटकने की कोशिश में कई दफे आप दूसरा विकेट भी खो देते हैं। यही भारतीय टीम के साथ भी हुआ। 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर चल रहा है। धीमी गेंद थी और बिल्कुल बीट हो गए सूर्य कुमार यादव। ये धीमी गेंद थी, पहचान नहीं पाया कि तेज गेंद है, तो पहले बैट चला गया और बेन स्टोक्स ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काफी धीमी क्रॉस सीम के साथ ये धीमी गेंद कर दी और कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरी तरह चकमा खा गए। बहुत ही बुद्धिमानी की, बहुत ही खूबसूरत। स्टोक्स देखने में तो बहुत ही मासूम से लगते हैं, लेकिन पता नहीं कितनी चालाकी, कितनी चतुराई उनकी बॉलिंग में भरी पड़ी। ये आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार। नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सुरक्षा एडिलेड में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के साथ मैं कनेक्ट लग के लिए प्रचार आज शाम 8 दिसंबर को की कुल 412। हमारे संवाददाता राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश विपक्ष में जनसभाएं संबोधित कर 6 runs there from Suryakumar Yadav, and not a moment too soon for the Indian cause. और इसकी बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत देर से बाउंड्रीज बिल्कुल सूख चुकी थी और ये शॉर्ट पिच थी। देखिए, मुश्किल काम था, ये काफी ऊपर चढ़ाई थी, और लेकिन फिर जिस तरह से कनेक्ट किया वो सूर्य कुमार यादव के ही बस की बात है। ये बिल्कुल कंधे की ऊंचाई तक आ गई थी, लेकिन कनेक्ट इतना अच्छा किया और बल्ले के बीचों बीच से लेने में सफल। अपनी कमर को पूरी तरह से मोड़ा, स्विवल किया और कनेक्शन बहुत ही शानदार, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच और फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत छक्का। ये बहुत ही बढ़िया। सूर्य कुमार यादव भी ऐसी परिस्थिति में इस तरह का स्ट्रोक खेलते हुए धीमी गेंद और आगे आए, निकल कर आए, ड्राइव किया ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ और फिर 4 रन। अभी एक छक्का लगाया था और फिर से चौका। ये होता ही है कि शॉर्ट पिच गेंद पर अगर आप हुक कर दो और 6 रन बना दो, तो फिर अगली गेंद बैट्समैन पहचानता है कि ओवर पिच जाएगी, और वैसे ही हुआ। फायदा उठाया और बढ़िया एक्स्ट्रा कवर करो, नीचे नहीं रखा जानबूझकर, लेकिन गैप में मारा, ऊंचा लगाया थोड़ा, लेकिन ताकत भरपूर, दिशा बिल्कुल उसी तरफ जिधर की मारना चाहते थे, और परिणाम 4 रन। Yes, 2 very good strokes there from Suryakumar Yadav. It was his 56th six this year. Thank you, Manoj Kumar, for that. And this was the highest scoring over of the Indian innings, the 11th over, 12 runs. And that's not saying very much, because we've seen 15, 16, 18, 20 run overs. Well, India need to do a little bit more of this. But Suryakumar Yadav showing how it can be done even on the slow deliveries. Adil Rashid into his last over, and he's bowling to Virat Kohli. And Kohli gets the ball, and he tries to turn out the onside, gets a leading edge. The ball flies away towards deep extra cover. But Bowen Ali very quickly behind that stops the scoring, keeps the scoring down to 1. Once again, you can see Virat Kohli very, very tentative
in the way that he's playing, but I think what he wanted to do was to give the strike back to Surya Yadav, because it's Yadav who's been the man of the moment. Sky, as he's called, and I had certainly personally predicted before the tournament that he would be one of the stars. Certainly, he hasn't let me down. 14 of 9 already, as Virat Kohli 28 of 25. India 75 for 2 now in the 12th over, and here goes Adil Rashid. Comes in and bowls, and down the wicket goes Suriyakumar Yadav. Where's the ball going? In the air, caught a deep cover, and that is a huge wicket. And we keep saying big wicket, huge wicket, but let me tell you, in the context of this semi-final, Sushil Doshi, this is a huge, huge wicket. And I remember yesterday, or reading today in the papers, by the England captain saying the semi-final is going to be a different ball game for Suriyakumar Yadav. When down the wicket, it was the slowest of slow leg spinners, got the top edge or outside edge, and the ball taken there by Philip Salt comfortably at deep point. Big loss for India, and a big win there for England as India 75 for 3. अब इसमें ये एक गलती कर गए सूर्य कुमार यादव के लेग स्टंप के पहले से बाहर की तरफ आ गए थे, और गेंद चूंकि टप्पा खाने के बाद लेग स्पिन हुई तो बाहर की तरफ निकल गई, उनके शरीर से दूर हो गई, और वहां से जब उन्होंने ताकत भरने की कोशिश की, ऐसी जगह से आपका संतुलन ठीक रहता नहीं, तब गेंद ऊंची ही जाती है और वैसे बाउंड्री लाइन के पार नहीं जा सकती, और ऐसा ही हुआ तो सिर ऊंचा चला गया था क्योंकि गेंद दूर थी, और इसी कारण वो ऑफ साइड में कैच कर लिए गए सॉल्ट द्वारा, और कैच भी सीधा उनके पास आया था। लेकिन कितना भी सरल हो, अगर आपको आउट करना है तो लेना तो आपको ही पड़ेगा, और कैच उस समय ले लिया। अगली गेंद को नए बैट्समैन पांड्या ने खेला, और ये अब जोड़ी काफी कुछ दारोमदार इस जोड़ी पर हो गया। Sushil, we keep saying that about every partnership that comes, and this is an important partnership. Listen, you got to hand it to England, you got to hand it to Adil Rashid. Jatin, tell me how many boundaries have been scored off Adil Rashid in this particular spell. Once again, that's nicely flighted. All Pandya can do is push the ball down the wicket for Rashid to pick up in his follow through. Just the one boundary in 4 overs so far, and for a spinner at Adelaide, that is a tremendous return. And I think that the Indian spinners should be looking at this and saying how we should be bowling on this wicket when we come into ball is something that we should learn from what Adil Rashid has been doing. This one, once again, it's been floated right up to Hardik Pandya, who gets off the mark finally on his third delivery, plays the way down to mid-off, rather long off, picks up a single. Last ball coming up of Rashid's spell, 1 for 19. Really excellent so far. And India rather having to press the reset button once again after that little flurry of boundaries from Suriyakumar Yadav. After bowling of Ben Stokes, Adil Rashid has got him out. Slip in place, and this one slightly short of length outside the off-stump and played away down to deep point. Once again picked up by Salt. Just the single, 1 for 20. Excellent overs, analysis rather, in 4 overs by Adil Rashid. And India 77 for 3 after 12 overs, just 6 runs per over. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holder. भारत गहरे संकट में फंस गया है और 77 रन पर 3 विकेट खो दिए हैं, और ओवर्स लगातार बीतते जा रहे हैं, वक्त समाप्त होता जा रहा है। 20 ओवर्स में से 12 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। आखिरी 8 ओवर्स का रोमांच अभी बाकी है इस पारी में। देखना है कि भारत कितने रन बना पाता है। मुझे याद है पाकिस्तान के खिलाफ इसी जोड़ी ने बहुत कुछ कारगुजारियां कर दी थी। नए ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया ऑफ साइड में, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, और कप्तान तो नहीं, कप्तान तो विकेट कीपर ही है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर पर हमने देखा था कि फील्ड कर लिया गया और 1 ही रन बना। हालांकि स्ट्रोक अच्छा था, बैकफुट पर पंच किया था, लेकिन जिस तरह से विकेट गिरते जा रहे हैं, धीमे विकेट पर फ्रंट फुट से आकर खेलने की कोशिश और लगातार गलत स्ट्रोक्स हम देख रहे हैं, क्योंकि जहां बैकफुट पर जाना चाहिए वहां फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रहे हैं और धीमे विकेट पर कैचेस जा रहे हैं। और सॉल्ट ने भी बहुत ही आसानी के साथ कैच लिया था जब सूर्य कुमार यादव का बड़ा विकेट गिर गया था, और ये फिर से ये कैच छूट गया। इस बार पॉइंट पर, बैकवर्ड पॉइंट पर कैच गया था, ऑफ साइड में उठाकर मारना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा लिविंगस्टन की इस गेंद को, और जैसे ही कैच सीधा हालांकि आगे की तरफ गिरा था, डाइव करके कैच लेने की कोशिश की थी, थोड़ा सा आगे गिर गया, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक मौका था।
आदिल रशीद तमाम परीक्षाएं लेते हुए इस बार लेग ब्रेक थी, ऑफ स्टंप के बाहर और बैकफुट पर जाकर धीरे से पुश किया, 1 रन दिया और मुस्कुरा रहे हैं पांड्या की मुश्किल परिस्थितियां उनको मालूम है, लेकिन पार तो नहीं पाना पड़ेगा. Well, Livingston having a giggle because he knows he could have got Pandya out twice in that over. And here goes Virat Kohli, who pushes the ball away to mid-wicket. And I have absolutely no idea, frankly, Sushil, what the Indian strategy is now. You are into the end of the 12th over, coming up just 7 overs after this. Yeah, 13th over, at the end of the 13th over. Thank you. Coming up, just one delivery. You please call that, and then I'll tell you what I have to say. ये अगली गेंद आगे निकल कर आए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव करने की कोशिश की एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन मोइन अली होशियार थे, चौका ने तेजी के साथ फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं और उसी के साथ 13वां ओवर समाप्त हुआ. 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत अभी भी गहरे संकट में. आखिरी के 7 ओवर्स का खेल इस पारी में बाकी है और भारत को बहुत कुछ मरम्मत का कार्य करने की जरूरत है. The last 2 overs have brought only 6 runs. Now, we are talking now about the 12th and 13th over of a T20 game, which is the semi-final of the World Cup. You can just imagine the way that England have used their brains. You said Dimag, yes, they have used their Dimag to be able to bowl, use these conditions so well. The slow deliveries, Adil Rashid, I haven't seen him bowl so slow, flighting the ball, beating the batsman in the air. And the Indian batsmen have absolutely lost the ability to go down the wicket and hit straight. They've tried to hit across the line, they've tried to hit towards extra cover, but to hit straight, they completely lost it. Remember, very long straight boundaries at Adelaide. That's one of the features of this ground. The Adelaide Oval, that's why it's called, because it's more of an oval shape rather than a round shape. So whatever it is, India only have 42 deliveries to redress the balance. The next ball going down the wicket. Seeing that, he played it, dropped the ball in short, did Chris Woakes, and just the single. So Hardik Pandya now, who could have been out twice in the previous over from Liam Livingstone, is a part-time leg spinner. He's getting the ball to turn and beating the batsman in the air. You can see the Indian dressing room absolutely stone still. Not a muscle moving on the faces or any other part of the body, because they realize now that they're well behind the 8 ball in this particular context. 4 deep fielders on the onside to Chris Woakes. Just the one on the offside, that's deep point. So the offside quite open if you want to go over that. This one slightly short of length, coming back into Pandya, who punts it away down to deep mid wicket. So 4 onside fielders. You can understand the strategy now. It's going to be short and getting into the body of the batsman, which means they've got to play it away towards the onside. You've got 4 fielders deep on the onside, and therefore maximum perhaps you can pick up 2 runs. It's been singles all the way. I think we've had singles now for the last 10, 12 deliveries. Jatan will let me know. Nothing more than singles. As there goes Woakes bowling to Virat. Comes in and bowls, and Virat gets a slow delivery outside the off stump. This time is able to beat the man, the third man, and it goes away down to the point boundary. 4 runs. Finally, India getting some shackles taken off. Maybe 1 shackle out of the 10 that are on them so far. And Virat moves on to 36. A scratchy 36, but nevertheless, he's still there. And India move on to 80. Tell you in a second, 86 for the loss of 3 wickets in the middle of the 14th over. It was the slow delivery, got the outside edge and just to the right of the man at short third man. And a lucky boundary there for Virat Kohli and for India, as here goes Woakes. Jatin's getting me that stat of how many singles in the last few overs. Just singles, nothing more. This one is driven up to long off. The bowler is pitched up outside the off stump. Not being able to time his strokes at all. Not being able to pick the gaps at all is Virat Kohli as he rehearses what he wanted to do, which is to hit it over extra cover. But really now, I think it's a mental game. I mean, India really mentally are feeling the pressure. The score predictor still 165, which means that India have to score 12 runs in over to get there. 7 singles in 12 balls. That's the... And before the boundary came. So you can just run 2 overs, just 7 singles, 5 dot balls in the back half of your batting innings. It shows again the type of stranglehold that England have been able to employ on India so far. Here goes Woakes into his third over, 1 for 21. Comes in and bowls to Pandya, and this one is down the leg side and goes up for in appeal for a catch, and that's a wide ball given there by Paul Rifle.
thought about it, that did he get a nick? And is he asking for DRS? Is just Butler? No, I don't think that they are, as wide has been signaled there by Old Rifle. And in fact, even for height, he's looking whether it's height or whether he got a nick of the thing, of his glove. In fact, for height as well, it could have been a wide. Wide certainly down the leg side, so whatever it is wide. And this one, again, slightly slower bouncer that crept up to Hardik Pandya, who plays it way out deep mid wicket. And Pandya just 4 of 9 deliveries so far. Just 4 of 9 deliveries for a prolific, hard-hitting batsman who can clear the boundary at will. And that's exactly what India need at this particular moment. Remember, there's Rishabh Pant still waiting in the wings. It's going to be his first game, I think, if I recall correctly, in this tournament, or perhaps second. And hasn't really batted so far, if I can remember. Just tell me this, please, Jatin, if you can find. I don't think he batted in that game that he played. Here goes. Scored 3 runs. Thank you, Manoj Kumar. So that's not really an outing in the T20 World Cup. 93 as the next ball is played away quietly towards mid-wicket. They pick up a single. And in that over, 10 runs then, I think, in that over. So another double-digit over for India. But it's still only 9 and 14 overs being consumed. So I think now score that they might be looking for, 6 overs to go, 10 runs and over, let's say 12 runs and over, 90, 70, 160. If they get there, I think India will be a very happy team. बिल्कुल, अभी तो ऐसी स्थिति दिख रही है और बहुत ही मुश्किल में पड़ा हुआ है भारत। और यहाँ पर कभी विकेट गिर गया, क्योंकि दबाव तो देखिए बहुत ज्यादा है, पर जैसे जोखिम आप लेना चाहते हैं, ये इंग्लैंड बोलर्स दिखने में उतने तेज तर्राट नहीं दिखते, लेकिन ये फुल टॉस गेंद का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर जमा, 1 ही रन मिला। विराट कोहली खुद भी प्रसन्न नहीं है, इसको तो चौके के लिए बनाना चाहिए था। कर्रन ने गेंद को फील्ड किया, वापस किया बॉलर के पास, 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और भारत का इंग्लैंड के विरुद्ध जो सबसे कम स्कोर है वो 9 विकेट पर 120 रन, ये स्कोर उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध कलकत्ता में बनाया था। और जिस चौके की तलाश से आखिरकार वो प्राप्त हुआ, और स्ट्रेट फील्ड बाउंड्री, उसी का जिक्र कर रहे थे कि सीधा खेलने से बेहतर है बजाय कि क्रॉस बैटेड शॉट खेलने से। बहुत देर बाद ये एक चौका लगा और भारतीय समर्थकों में बहुत देर बाद जो पहले निराशा का वातावरण था, फिर से आशा बन गई। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ताकत भी भरपूर, टाइमिंग भी मजेदार, और सीधा बॉलर के पास से, वहां तो कोई फील्डर जमा होता नहीं, तो बहुत ही बढ़िया चौका। अब लगता है कि एक्सीलरेटर पर ब्रेक जो पहले लगा हुआ था, अब एक्सीलरेटर पर पांव दबाने का मौका आ गया है। कोशिश हो रही है मौका, I don't know, कोशिश हो रही है। पांड्या 8 रन पर पहुंच चुके हैं और कोहली 39 रन पर। ये दोनों जुझारू खिलाड़ी हैं, इनकी रग रग में संघर्ष समाया हुआ है। और इस बार ड्राइव किया ऑफ साइड पे, सीधा एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कोई रन नहीं। ये होता है जब आप विकेट खो देते हैं, तब आप कमजोर गेंद को भी चौके की राह पर नहीं दिखा पाते। A very interesting fielding change. There's a bowler right behind, there's a fielder right behind the bowler. Was straight, almost straight. Where that ball went down to the boundary, there's a fielder right there for the lofted on drive or the off drive. Very, very interesting field change there by Jos Buttler. अगली गेंद ये तो फ्लाइट किया था, और फ्लाइटेड गेंद पर जबकि लिविंगस्टन कोई ऐसे पहचाने हुए जाने पहचाने स्पिनर नहीं, लेकिन वो भी परेशानी पैदा कर रहे हैं। और स्पिनर्स को मदद तो हो रही, टप्पा खाकर धीमी आ रही है गेंद, कोई बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है ऐसा भी नहीं है, लेकिन टप्पा खाकर धीमी गति से बैट पर आ रही है, और यही भारतीयों को बहुत ही परेशानी का सबब बनी हुई है। विराट खेल रहे हैं अब 39 रन पर, फील्डिंग में फिर से परिवर्तन हो रहा है। एक शॉट फाइन लेग पर एक फील्डर है और लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे हैं। ये तीसरा ओवर है उनका, लग रहा था कि उनको काफी रमार पड़ेगी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। इस बार 30 गेंद कर दी थी लेग कटर की तरह। हालांकि स्पिनर है लेकिन अच्छी गेंद, वो एकदम से सरप्राइज जिसको कहते हैं, आश्चर्यचकित कर दिया था विराट को, और विराट ने बैकफुट से केवल वापस बॉलर की तरफ खेल दिया। अगली गेंद लिविंगस्टन की आगे निकलकर हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और 4 रन। हालांकि मिड ऑफ से आकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन नहीं कर पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं, चौके लगभग सूख चुके थे और भारत के 100 रन भी पूरे हो गए। 15वां ओवर समाप्त हुआ, 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
5 ओवर्स का खेल अभी भी बाकी है और ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही जुझारू, बहुत ही लड़ाके और खेल को दुश्मन की गली में ले जाकर खेलने के लिए विख्यात है। देखना है कि इस नाजुक मौके पर, जबकि भारत की उतनी रन संख्या बनी नहीं जिसके के लिए वो सोच रहे थे, इस नाजुक मौके पर वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। तो दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर है, लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप विकेट नहीं खोएं। अगर आपने विकेट खो दिया तो आप मुश्किलों में फिर से पड़ सकते हैं। That's the name of the game. You've got to go for it now. You just have 5 overs to go 30 deliveries. You can afford to lose wickets. You've got 8 wickets in hand. 7 wickets in hand, beg your pardon. And with that boundary, Virat Kohli brought up 4,000 runs in T20 games and balls per 50 for India as they struggled to 100 for 3. First 47, second 43. So marginally quicker, but certainly not the acceleration that they wanted. As you said, they're putting the foot to the accelerator. Well, they have no choice now. They have to do it. Remember, there's 7 wickets in hand, and they have to get to at least 160 from here to be able to give England a fight. But more importantly, they've got to learn from what England did in the way that England have bowled so far. India still 9 of 12 deliveries, so under a run a ball. 62 for 2 in the middle overs, 7 to 15. The last 5 overs coming up now. Slog overs. Here goes Chris Jordan down the leg side, and that's going to be called wide. And that's a good start if you were India, not such a good start if you're England, as every extra delivery gives India the chance of getting to that 160 mark. But I dare say that it's going to be the first 5 overs of the England innings that are going to decide this game. And I'm making a prediction about this because if they go after the Indian bowlers and put them under pressure, and I do think that that's what Joss Butler and Alex Hales are going to be doing, then I think it's going to be a very different game. Nevertheless, let's see what happens now in this 16th over. 101 for 3, India. As here goes Chris Jordan, bowling to Hardik Pandya, comes in bowls, and this one's on the pads, played away down towards deep backward square leg. Fielders absolutely in the right position. Sam Curran picks up the ball, hurls it back in, just the single on offer. Not being able to beat the deep field. That's been one of the banes of the Indian innings so far. And you've got to hand it both to the field placement as well as to the quality of the bowling. And the way that India really have put themselves under pressure. You can see there Rohit Sharma sitting in the dugout along with KL Rahul and Vikram Rathore, who's the batting coach. Not looking a happy bunch there. Not at all. Jolly bunch. Vikram Rathore sort of getting a smile onto his face because he knows that he's on television now. But still, finely poised, say slightly in favour of India. And this one going down the leg side, excellent Yorker there from Chris Jordan, and as he tried to play it away onto the onside, missed it completely, got it in his pads, maybe an inside edge, and they have actually gone up for the DRS, as the umpire Paul Rifle said, not out. So it remains to be seen exactly what happened. Virat Kohli seems to be very confident, but it was a very good delivery that Yorker there, Sushil. नहीं बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया यॉर्कर थी और ये बिल्कुल जिसको कहना अंगूठा तोड़ यॉर्कर कहता हूँ, अंगूठे के करीब नजदीक गिरी और लग तो ऐसा ही रहा था कि लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही, लेकिन पैड पर ये काफी पीछे की तरफ लगी थी और फ्रंट फुट पर भी नहीं थे, काफी पीछे थे। लेग स्टंप के कोने पर कहीं लग सकती है, लेकिन अंपायर के फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर ने यही कहा कि लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी। बैट से तो अलग दिख रही है। पहली चीज तो ये देखी जाती है कि बल्ले का किनारा तो नहीं लगा, बीच में किनारा लेकिन नहीं लगा। Yeah, certainly no inside edge, but you could see again it was the off cutter. But pitching on the leg stump and moving slightly further away, you can see there Virat Kohli getting back to his bowling mark. But at the end of the day, it's a dot ball. So, even if the wicket didn't come, it's a dot ball, and that's really what I think is always at this stage of the innings. Let's see, is it going to be hitting now? It is, in fact, umpire's call it was, as you called it, tickling the leg stump. And Paul Rifle looks at Jordan and says, well, listen, I couldn't be sure that it was hitting, and rightly so. When we saw it in replay as well, Sushil, we thought that it was missing the leg stump, or perhaps at best touching it, as you said, but certainly enough doubt in the umpire's mind. So 2 reviews remaining with each team, as India now 102 for 3. So you've seen a wide, you've seen a 1, you've seen a dot ball. Entire variety in the first 3 deliveries. Here goes Chris Jordan, that's driven off the back foot down towards deep extra cover to the boundary. 4 runs there from Virat Kohli. Controlled shot
And that's the type of shot that you see from a batsman of the highest class. It was a quick delivery, 142 Ks, but he waited on the ball because it was overpitched, didn't try to overhit the ball, and the ball then went just past Moeen Ali at extra cover, down to the extra cover boundary. Lovely shot, down on one knee, leading into it, and Moeen Ali had absolutely no chance at extra cover. Excellent boundary there from Virat Kohli, a good batsman's boundary. 106 for 3 then. Middle of the 16th over. Here goes Jordan coming and bowling to Virat Kohli. The slow delivery, the slower off cutter, played away quietly down towards deep mid wicket. Beaten slightly once again by the lack of pace. And just 116 Ks. So 142 Ks down to 160 Ks. You can imagine the batsman always in a quandary as to what the ball is going to be. And there's Virat in 48 now, 38. And Hardik on 10 of 13. So he's got to up the ante now. As we're coming up to the last 2 balls of the 16th over, 107 for 3. The only person with a smile on his face in the Indian dugout is Rishabh Pant, who hasn't had a bat so far. He can afford to smile, but he always has a smile. So I don't think that the situation faces him at all. Huge sport for India at the Adelaide Oval, as indeed it is anywhere in the world. Here goes Jordan bowls, and this one is pulled away. Once again, the slower bouncer. Once again, doesn't get hold of it. This time, perhaps they'll go through for 2 runs. As Livingston pretends to pick up the ball and throw it in, misses it completely, but then recovers, and indeed it is 2 runs to Hardik Pandya, who moves on to 12. As Pandya was on the go, and as you can see over there, what we see almost the false throw, which is something that now is frowned upon. And I've got the ball and I'm going to throw it, but you don't have it. Clouds in the distance at the Adelaide Oval, and perhaps that is one of the indications, or one of the reasons why England elected to go. But therefore, one of the key things is that India must not lose more wickets, because that, again, will change the equation if indeed rain plays a part in this game. This one is the slower bouncer once again, forced off his hips down towards deep back with square leg, picked up there by Jordan, just by Curran. Just the single on offer. 1 for 16 of 2 overs from Jordan, 110 for 3, and just the 4 overs to go after this. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. ये मैच अब इंग्लैंड ने अभी तक वो तो सोच ही रहे होंगे कि उन्होंने जो कुछ भी काम किया अब तक वो काफी ठीक काम किया अपनी टीम के लिए, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बॉलिंग की है, सही इलाकों में बॉलिंग की, बैट्समैन को खामोश रखा है और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बॉलिंग का आक्रमण निर्धारित किया। देखिए ये क्रिकेट का खेल है, कई लोगों को लगता है कि एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, लेकिन इसके लिए तमाम योजनाएं बनानी पड़ती है। जो सोच विचारक आपकी टीम में रहते हैं, विद्वान लोग, क्रिकेट जो काफी खेले रहते हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि किस तरह की बॉलिंग किस बैट्समैन को करना चाहिए। हर बल्लेबाज के लिए एक योजना बनाई जाती है, उसी तरह को वो अमली जामा मैदान पर उतारने की कोशिश करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड ने जो कुछ भी अभी तक किया, अब जो कुछ भी योजनाएं उन्होंने बनाई, उसको ठीक तरह से अमली जामा मैदान पर पहना रहे और भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों पर वार कर रहे हैं। धीमी गेंद कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आना चाहते हैं भारतीय बल्लेबाज, लेकिन फ्रंट फुट पर खेलने का कम ही मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो धीमी गेंदें कर रहे हैं और आप धीमी गेंदों पर फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो कैच जाएगा। ये बैक फुट पर जाकर उन्होंने सुंदरता के साथ ऑफ साइड में खेल दिया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बल्ले से लगी और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, क्या गजब का स्ट्रोक, और बैक फुट पर इतनी ताकत पांड्या की, गजब का स्ट्रोक। और मैं यही कह रहा था कि ये जो जोड़ी है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत को मदद की थी और क्या ताकत है इसकी भुजाओं में, प्रशंसा करनी होगी। बैक फुट पर जाकर और छक्का ऑफ साइड में, गजब का स्ट्रोक। Yes, an excellent shot. It was one of the quicker deliveries, 122 Ks. Normally he bowls about 115, 116 Sam Curran. I dare say this is going to be a slow delivery. In fact, it's the slower bounce and played away down towards deep square leg. Excellent fielding down there by Alex Hales. तो इस तरह से 2 रन और बन गए और पांड्या ने अब तो ये तो निश्चित है कि उनको मालूम है कि मरता क्या न करता। अभी तो ये मौका है जब कुछ न कुछ विशेष करना पड़ेगा और कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम अक्सर सुनते हैं। तो देखना है कि क्या पांड्या और दूसरे सिरे पर विराट कोहली जो खेल रहे हैं वो भारतीय चेहरों पर मुस्कुराहट फिर से ला पाएंगे। 17वां ओवर चल रहा है, 17वें ओवर की भी 2 गेंद हो चुकी है। उदास हैं भारतीय दर्शक।
ये अगले गेंद ओवर पिच थी, ऑफ स्टंप और एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लेकिन फील्डिंग भी बहुत ही चुस्त और बहुत ही मुस्तैद। और जब आपकी किस्मत ठीक नहीं रहती तो आप स्ट्रोक भी सीधा फील्डर की तरफ ही खेल देते हैं। हालांकि ताकत अच्छी थी, स्ट्रोक भी अच्छा था, लेकिन फील्डर मोइन अली सीधा एक्स्ट्रा कवर पर उनके पास ही गेंद गई, कोई रन नहीं मिला। 17 ओवर्स करीब करीब पूरे होना चाहते हैं। विराट कोहली 48 रन पर खेल रहे हैं। 38 गेंदों में ये 48 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट भले ही 126 के ऊपर का हो, लेकिन प्रसन्न नहीं है जिस तरह से वो खेल रहे हैं। अगली गेंद ओवर पिच थी, लगभग यॉर्कर लेग थी और ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं। जब हाँ बदले के काफी निचले हिस्से से लगकर और अंदरूनी हिस्से से लगकर गेंद गई बॉलर के पीछे की तरफ चली गई। 2 रन फिर भी मिल गए। तो अब 48 रन पर विराट कोहली पहुंचे। 25 इनिंग्स में विराट कोहली के 1139 रन बने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप करियर में। 87 के ऊपर का औसत है। तो सभी तरह के प्रारूपों में ये एक किंग कोहली जैसा लोग कहते हैं ना, उसी तरह से साबित होना चाहते हैं। हालांकि उनकी पारी वैसी तो नहीं कही जा सकती जैसी राजाओं की पारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं, किला लड़ा रहे हैं। पांड्या अब सामना कर रहे हैं, शॉर्ट पिच थी, बाउंसर, लेकिन उन्होंने अपर कट करने की कोशिश की थी, पांड्या ने बच गए। अच्छा हुआ नहीं लगी, बैट का ऊपरी हिस्सा लगाना चाहते थे, नहीं लगा। विकेट कीपर ने उस गेंद को फील्ड किया, बटलर ने। और बटलर चूंकि भारतीय कंडीशंस में, भारतीय माहौल में खेलते हैं, आईपीएल में अक्सर आते हैं, भारतीय खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं, वही इंग्लैंड के कप्तान है। तो वही अपनी टीम को ठीक से निर्देशित भी कर रहे हैं, किस बैट्समैन को किस तरह की बॉलिंग करना, ये बात भी वो पैदा कर रहे हैं और काफी सफल है अभी तक। और इस बार ऑफ साइड में आ गए थे और ऑन साइड में खेल दिया, लेकिन फिर भी 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 17 ओवर्स की समाप्ति के साथ स्कोर हो गया 121 रन। 3 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं भारतीय, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे। बॉलिंग बढ़िया हो रही, फील्डिंग चुस्त हो रही और बैट्समैन का फॉर्म वैसा नजर नहीं आ रहा, वो आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा। विराट कोहली अर्धशतक के नजदीक जरूर है, लेकिन फिर भी वो आत्मविश्वास की पारी, वो खुद भी अपनी इस पारी को शायद फिर से पसंद करना नहीं चाहेंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में खेली एक उपयोगी पारी जरूर कहा जा सकता है। Yes, 3 overs left then, 18 deliveries so far in the 17 overs that India have played. 11 boundaries and 3 sixes. So we've topped those up. 11 plus 3 is 14, less than 1 and over. And really that's a sort of rule of thumb in the T20 game. At least 1 boundary and over is what you would expect in a T20 game. Nevertheless, 18 deliveries to go. India 121 for 3. Can they hit that 160 mark? 170, I think, is a bridge too far. Personally, if you ask me, you never know, of course, if they get going, but the way that the wicket is playing very slow and the way that the England bowlers are bowling extremely intelligent and very well set field. See, so many shots going, good shots going straight to the fielder and not getting the gaps. I think it's been really exemplary what Jos Buttler has done at the Adelaide Oval after winning the toss. Here goes Jordan. 1 for 16 in 2, and he's bowling to Pandya, and Pandya gets a short delivery and it's hammered over, down towards over deep mid wicket. 6 runs for Hardik Pandya. A lovely ball, a lovely shot. It was 129 k's, so not really that quick, but picked up both the length as well as the line and the pace of the delivery, waited on the back foot and then pulled it away down towards deep mid wicket for 6 runs. And the 50 partnership, 35 deliveries in 26 minutes. Thank you, Jatin Sood, always on the ball. Here is Jatin. And right now it seems to be that finally India are on the boil, if not on the ball. 127 for 3 as partnership is 52 of 37 deliveries. So finally that partnership you were talking about, ye hai partnership, this seems to be this one. There's a lovely shot off his toes into deep backward square leg over the boundary. 6 runs, 2 consecutive sixes there from Hardik Pandya. Moves them on to 36 of 23. This is the type of acceleration that India desperately needed to reach, as we said, at least a defendable score. And both sixes over the onside. Remember, they're short leg square boundaries here at the Adelaide Oval. This was the quicker delivery on the pads. Had sailed over. It would have been a 6 on any ground in the world there from Hardik Pandya. And Chris Jordan gives a wry smile as he walks back. Is giving pace 146 clicks. And I'm sure Jos Buttler, in fact, he's jogging up to Chris Jordan saying, why are you giving Hardik Pandya pace? You got to take pace off the ball.
So 6-6. And I dare say this is going to be the highest scoring over so far in the Indian innings so far. It's been 12 so far. Here goes the short delivery, and is it going to be called a wide for height? No, it's not. Yes, the one for the over, signals ball rifle. It was a slow bouncer, but nevertheless a dot ball, and that's what Jos Butler wanted. You can see much slower in the air and going over the shoulder of Hardik Pandya. 133 for 3 then. Kohli and 48 watching the pyrotechnics from the other side, and Pandya then really suddenly getting the spark lighted in him, moving on to 36 for 24. 3 sixes in just the solitary boundary, but has given that impetus to the Indian innings that it so sorely required. 133 for 3. The run rate now finally over the 7 mark, 7.6. It was under 7 for a long period during its innings. 133 for 3. Here goes Jordan. For his 4th delivery in his over, comes in bowls on the pads. A very good ball. It was a Yorker, but managed to jab his back down on that at the very last moment there. Pandya, had he missed it, he was a goner. Nevertheless picks up a single down to the backward square leg. And we shall now see what people have been calling, or whom people we should be calling, the man called King Kohli. He is going to be on strike as we see replays on our television screen of those 6 sixes hit by Yuvraj Singh against Stuart Broad at the 2007 World Cup. The only World Cup, I must remind listeners, that India have ever won, the T20 format. Here's a chance then for India to redress that particular statistic. There goes Jordan bowling to Kohli. Comes in bowls and Kohli drives way down towards deep extra cover. Is it going away towards the boundary? No, they are able to pick up 2 runs as the ball is picked up and moves on to his 37th 50. Thank you, Virat Kohli, in T20 internationals, and of just 39 deliveries, 4 boundaries and 1 6. Thank you, Jatin. 136 for 3. 6-6-1-2, the highest scoring over of the innings so far, Jatin. By far, I would say. 15 runs in this over. And still a delivery to go. What can Virat Kohli conjure up for India? What can indeed Chris Jordan conjure up for England? Would be the opposing thoughts in both captains' minds. One sitting in the dugout, one on the field. The run rate now 7.63 per over. Here goes Jordan. Comes in and bowls to Kohli, and this is slightly slower and in the air. And is it caught? Down at backward short leg, backward point. Yes, Adil Rashid, the slow delivery. No, in fact, it was the quicker delivery. I thought it was a slow one. Caught as he went for the drive, got the outside edge as he reached his 50. And at such an important juncture, Chris Jordan picked up that wicket. As he went for the drive, the ball was wide outside the off stump, got the outside edge. The ball flew away. Very good diving catch away to his right by Adil Rashid. And England strike at the bottom of the 18th over, 136 for 4. बहुत ही बड़ा विकेट गिर गया है विराट कोहली का, और कोशिश तो जानबूझकर उन्होंने उस गेंद को अपना बैट का मुंह खोलकर स्ट्रोक जमाने की कोशिश की थी, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर आदिल रशीद उतने चुस्त फील्डर कहे भी नहीं जाते, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह का कैच लिया उसकी प्रशंसा करनी होगी। बहुत ही बढ़िया। और आदिल रशीद तो बारे में कहना पड़ेगा कि इस मैच में वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, भारतीयों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, विकेट चटकाए, और अब फील्डिंग में उन्होंने शानदार कैच लिया। तो सब कुछ ठीक चल रहा आदिल रशीद के लिए भी, और भारतीय स्थिति अब खराब हो गई है। 136 रन पर चौथा विकेट गिर गया है। ज्यादा बल्लेबाजी अभी भी शेष नहीं है। ऋषभ पंत आए, हालांकि हम जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में भी उन्होंने भारत के लिए बहुत जबरदस्त काम किया था, भारत को टेस्ट मैच जिताया, श्रृंखला जिताई, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। हमें सवाल ये है कि आज के दिन जबकि तेज रनों की जरूरत है, क्या वो कर पाएंगे। इन दिनों उनका फॉर्म भी वैसा चल नहीं रहा, बहुत दिनों से उन्हें खिलाया भी नहीं जा रहा था। दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, उनकी जगह आज खिलाया गया। ओवर्स कम बचे हैं, केवल 2 ही ओवर्स का खेल बचा हुआ है करीब। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, देखने की बात होगी। दबाव उनके ऊपर होगा, लेकिन कुल मिलाकर भारतीयों ने अभी तक बल्लेबाजी में निराश किया है। कॉर्नर ने गेंद की धीमी गेंद, इतनी रफ्तार नहीं रख रहे हैं। ऑफर मिडिल स्टंप पर पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे। अच्छा हुआ सही समय पर वापस कदम खींच लिए क्रीज में, जोखिम भरा हो सकता था। और जिस तरह के जानबूझकर बल्ले का मुंह खोला था, लेकिन बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और शॉर्ट थर्ड मैन पर जहां फील्डर खड़े थे आदिल,
रशीद, उन्होंने बहुत बढ़िया कैच करके विराट कोहली को आउट किया था। प्रशंसा करनी होगी। रात इतने चुस्त फील्डर कहे नहीं जाते। इंग्लैंड की फील्डिंग में एक कमजोर कड़ी माने जाते थे और कमजोर कड़ी जान माने जाते थे बॉलिंग में जॉर्डन, लेकिन जॉर्डन ने आज 2 विकेट ले लिए, हालांकि उन्होंने मार भी काफी खाई। करन बॉलिंग कर रहे हैं, एक बार फिर से काफी किफायती। ऋषभ पंत सामना कर रहे हैं। 54 पारियों में 964 रन बनाए, 23.51 के औसत स्ट्राइक रेट उनका 127 के करीब का रहता है और 3 बार अर्धशतक भी लगा चुके हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक है उनका 65 नॉट आउट। लेकिन यहाँ पर कुछ तेज हाथ चला दें, ये उन्होंने आते ही ऑफ साइड में ऊंचा उठाया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और 4 रन जानबूझकर बैकफुट पर जाकर ऊंचा उठाकर मारा। कवर पर अंदर खड़े थे, ऊपर से जानबूझकर उन्होंने करारा प्रहार किया हॉरिजॉन्टल बैट से। आड़े बल्ले से इस तरह के ऑफ साइड में स्ट्रोक देखते नहीं है, लेकिन उन्होंने खेल दिया और 4 रन पॉइंट और कवर के बीच में से। Yes, it was more top edgish than anything, but that's where he intended the ball to go as it trickled into the boundary over the bad fielding at the point, with cover point within the circle. As Ashwin getting ready to come in case a wicket falls. Rishabh Pant getting off the mark very well. 4 of the very first delivery he faced. और इस बार यॉर्कर गेंद थी कॉरन की, बहुत अच्छी गेंद लेग स्टंप पर थी और लगभग अंगूठा तोड़ यॉर्कर जिसको मैं कहता हूं, लेकिन जैसे तैसे खेलने में सफल हुए ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ और 1 रन और मिल गया ऋषभ पंत को। अब हार्दिक पांड्या 38 पर सामना करेंगे। 3 गेंदों पर 6 रन बन चुके हैं। 142 रन का स्कोर हो चुका है। 160 रन जिसका आप कह रहे थे कि वो तो अब लगता है कि ये दोनों बल्लेबाज अगर टिके रहे तो 160 रन बन सकते हैं और तब भारत संघर्ष के साथ इस मैच में लौटना चाहेगा। इतना तो स्कोर हो जाएगा कि जहां से संघर्ष कर सके। और एक बार फिर से यॉर्कर और ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ बल्ले का मुंह खोला और स्टीयर कर दिया पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। हार्दिक पांड्या बात की बात में अब 42 रन पर पहुंच चुके हैं। ताकत बिल्कुल भी कम, ये बुद्धिमानी का स्ट्रोक मैं कहता हूं। ताकत आपने प्रतिद्वंद्वी की ली और केवल स्टीयर किया ऑफ साइड में। बुरी गेंद नहीं थी, यॉर्कर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी गेंद कही जाती T20 क्रिकेट में, लेकिन जब बल्लेबाज भी आपसे बेहतर हो तब वो इस तरह का काम कर सकता है। चौका। 10 रन बन चुके हैं इस ओवर में करन के। हार्दिक पांड्या सामना कर रहे हैं करन का। ये अगली गेंद शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, जैसे ही बैट से निकली 6 रन की जैसे उस पर छाप लगी थी। क्या गजब का स्ट्रोक, क्या टाइमिंग, और गेंद के लेग्स को कितनी जल्दी पहचान लिया। तो फ्रंट फुट पर थे, लेकिन फिर भी केवल अपने बैकफुट पर उन्होंने वेट को परिवर्तित किया और वहां पर फिर सुंदरता के साथ ये क्या टाइमिंग और क्या स्ट्राइक। 6 रन। That's an excellent shot there from Hardik Pandya. We know exactly what he's capable of. Short, no pace on it whatsoever. 82 meters, that 6, and the third 50 coming in just 23 deliveries, or half what was taken earlier. And the type of acceleration we know, 152 for 4, still 1 delivery of the 19th over. And everybody says the 19th over is perhaps even more crucial than the 20th over. Already in this over, we've seen 10, 4, and 2, 16 runs in 5 deliveries. And maybe, just maybe, India can hope to get over that, as I said, 160, maybe even 165 mark if they don't lose a wicket and Rishabh Pant can get going, as Joss Butler has a chat with his bowler. 38 runs in 3.5 overs so far. Really, he was being touted as one of the premier bowlers, especially at the death, Sam Curran, in this format. But so far, at least, India have got the better of him. आखिरी के 12 गेंदों में 32 रन बने। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से करारे प्रहार लगा रहे हैं, खास करके हार्दिक पांड्या। अगली गेंद थी और हार्दिक पांड्या ने ऑन साइड में खेला खूबसूरती के साथ। विकेट बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन हाथों से टकराकर बाउंड्री लाइन पर छू गई। कोशिश बहुत की थी बेन स्टोक्स ने, लेकिन गेंद आखिरी वक्त हाथों से छिटक गई और गेंद सीधी 4 रन। उसी के साथ पांड्या का अर्धशतक भी पूरा हुआ। और क्या अर्धशतक है, 29 गेंदों पर 52 रन। और इसने भारत को इस मैच में बहुत ही ताकत के साथ लौटा दिया, क्योंकि जब आप इस मोमेंटम के साथ मैच में फिर से लौटते हैं तो आपकी शारीरिक भाषा अलग तरह की होती है। आप संघर्ष
करना चाहते हैं और आपके सारे खिलाड़ियों के मनों में एक आत्मविश्वास होता है और आपके शरीर में एक रसायन अलग तरह से दौड़ने लगता है. Yes, 52 of just 29 deliveries, and the type of acceleration that India were searching for desperately in the last 5 overs. 16th over 10 runs, 17th over 11, 18th over 15. This last over that we've seen, the 19th, 20 runs in this over have propelled India to 156 for 4. It was really something that at one point of time, it was looking really out of reach, and we were talking about 150, maybe 160. Now I think India can look definitely at about 165, but then again it depends who's going to bowl the last over. It's going to be Pant who's going to be facing, but really Hardik Pandya coming to the party as he does so often. We've seen him do it in Australia in the one-day international. I remember with Ravinder Jadeja when India were here last against Australia playing ODIs, I think a couple of years ago, and how they clattered them over 100 runs, I think, in the last 15 overs or maybe 14 overs, and got India to win that T20, I beg your pardon, the ODI series. 1 over to go. Then one crucial over to go to see whether India can put up a challenging total and beat England in this very crucial semi-final and face up to Pakistan in what is going to be a mouth-watering, absolutely inspiring final coming up. India will desperately want to play Pakistan again because Pakistan, as I said, have got the better of India in a couple of finals played so far, at least in the second game that they played in the tournament. Rishabh Pant in 5 of 2 deliveries came to the fall of Virat Kohli's wicket, who was going so well. He was out on 50, as it is going to be Jordan, the death over specialist, standing deep in his crease. There is Rishabh Pant. That's wide. It's a full toss wide outside the off stump, played away to Ben Stokes, who picks up cleanly this time just the single to Rishabh Pant, the full toss outside the off stump just for the single. And it's going to be Pandya now. Pandya really got a very slow start. I think his first 5 or 6 runs took about 10 deliveries, and after that he's really been on the hunt and has played some absolutely immaculate shots. Strength, power, placement, and more than anything else, intelligence. 5 deliveries now left of the Indian innings. 157-4. Hardik Pandya on 52, just 29 deliveries taking strike. And the entire Indian dugout now on their feet, waiting to see what's going to happen. Jos Buttler jogs all the way up from his keeper's position to Chris Jordan to give him a piece of advice in his ear. And there he is now, bowling slightly shorter run-up. Chris Jordan this time. And this is the slow delivery in the air, down towards deep point. Just the single on offer as Solj picks up. Think about 2, but no 2 on offer. You don't want to just give up your bigger button. That was Harry Brook at deep point. Wasn't able to beat the fielder once again on the boundary line. So 2 good shots going straight to the fielders. One a deep cover, the second one at deep point. And it's going to be Rishabh Pant now, facing up to Jordan. Jos Buttler will be happy with this start. Just the 2 singles in the final over. As we see Jordan getting ready to bowl to the left-handed batsman. The left-right hand combination can sometimes disturb the bowler's equilibrium. But here goes Jordan outside the off-stump, and very, very good delivery. And this time, in fact, is a run-out, comical run-out, as Pandya wanted to get to the batsman's end, and Rishabh Pant sacrificed his wicket, and went to the bowler's end when he had absolutely no chance. But this was all because of an excellent yorker from Chris Jordan that beat Rishabh Pant's flailing bat outside the off-stump. And not even anywhere near the wicket as he gets run out for 6. But the more important thing, you would say, from India's point of view, is that Pandya is on strike. But insofar as England are concerned, final over, 3 deliveries, just the 2 runs and the wicket. And I can tell you it's been a good comeback by Chris Jordan so far. ये मानना पड़ेगा क्योंकि साधारणतः हमने देखा आईपीएल में भी वो आखिरी ओवर्स में अपना आपा खो बैठते हैं और बहुत ही कमजोर गेंदबाजी करने लगते हैं. मैं तो उनको कमजोर कड़ी मान रहा था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं बहुत ही समझबूझ, और यॉर्कर्स बिल्कुल जब चाह रहे हैं तब यॉर्कर गेंद कर दे रहे हैं, बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल रहे हैं. और पांड्या की मैं कहना चाह रहा था कि वो जिस तरह से खेलते हैं बैकफुट पर खड़े रहते हैं,
और वहीं से और क्रीज की गहराई का जिस तरह से उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बैट्समैन जब भी बॉलर यॉर्कर करने की कोशिश करता है तो उसको भी चौकों में गिनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा बहुत कम बल्लेबाज कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए अटूट आत्मविश्वास की जरूरत होती है। 3 men deep on the onside, 2 on the offside, 1 deep extra cover, 1 deep point. As here goes Jordan bowling to Pandya, and Pandya in the air, the ball going high. Where is it going to fall? Is it going to fall inside? No, it's gone over the boundary. 6 runs down to deep mid on. And exactly the type of, as I said, compelling innings that India needed. Moves on to 59. India getting over that 160 mark, 164 for 5, 317 sixes in this World T20 tournament being played in Australia so far. That was, again, as you said, so rightly, standing deep in his crease. And even though it was overpitched, was able to get under the ball. Went high in the air, but well over the fielder there at long on 84 meters. That 6 and 164 for 5. So that sacrifice perhaps paying off. As India 164 for 5 then. Here goes Jordan. This is a full toss. And this one has been deposited into the stands. A deep mid wicket, or is it 4? Remains to be seen, to my mind, maybe over the boundary. No, just pitched just inside. So 4 then. It was a full toss and deposited into the boundary at deep square leg. 4 runs. 168 for 5. So that 170 mark, which I personally thought was going to be virtually impossible, has been made possible by this incredible knock, really. ये T20 क्रिकेट का चरित्र ही ऐसा होता है, क्योंकि आप कह रहे थे कि 170 रन तो कम से कम अगर बनना चाहिए इस विकेट पर, नहीं तो भारत मुश्किल में पड़ सकता है। भारतीय खेमे में भी जो उदासी पहले छाई हुई थी, अब दांत दिखाई दे रहे हैं, चेहरे मुस्कुराते हुए भी दिख रहे हैं। It was a high full toss, and I think they reviewed it perhaps for being overhyped, but no, I don't think it has been. It was a genuine delivery, legitimate delivery. So the last ball then coming up of the Indian innings, 168 for 5. There goes Jordan, 2 for 43. There goes Jordan, comes in and bowls that short of length, and he's hit his own wickets, stepped on them, even though the ball went down to the boundary, but he stepped on his own wickets as he went so deep in the crease. So slight anti-climax there from India at the fag end of the innings, but still, nevertheless, command innings there from Hardik Pandya, 63 of 33 deliveries, but really, as I said, a slightly comical end as he stepped onto his wickets. Yes, it was a 4 otherwise, and it went down to the boundary, but nevertheless, he'd stepped on the wicket before that. So at the end of the Indian innings, which started poorly but ended at 168 for 6, England need 8.45 runs per over to score 169 runs to meet Pakistan at Melbourne in the final of the World T20 World Cup. सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है। एक और चौका भारत को मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहां पर। आपका अपना प्रिय चैनल आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए T20 वर्ल्ड कप 2022। भारत के सभी मैच FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले स्टेशंस, DRM और DTH पर, और अन्य मैचों की कमेंट्री LRS, FM रिले स्टेशंस, DRM और DTH पर। तो सुनना ना भूलें T20 वर्ल्ड कप का रोमांच सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. Free Hit 2020. Hello and a very warm welcome to all the listeners of All India Radio. दोस्तों मैं हूँ साक्षी मानवार और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फ्री हिट 2020 यानी the innings break of the big game that is happening today at Adelaide Oval between India and England. Well, clearly England winning the toss today, choosing to field first, and thereby Indians being put to bat first, putting 168 on board in 20 overs. Lots more in discussion over here. I'm joined over here by my dear friend and co-anchor for the day. We have with us Mahabir Rawat. Good afternoon, Mahabir. Good afternoon, Sakshi. और हमारे शो की तरफ फ्री हिट ही
एक मूड में नजर आए हार्दिक पांड्या, क्योंकि उनकी जो ताबड़तोड़ पारी है वो इसी के लिए जाने जाते हैं और इसी के लिए उन्हें ऋषभ पंत से आगे इस बार भेजा गया। और क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। स्टूडियो में हमारे साथ क्रिकेटर बंटू सिंह और वरिष्ठ पत्रकार एस कनन जी हैं। सर, क्या कहते, एक समय ऐसा लग रहा था कि 140 145 कनन जी भारत पहुंचेगा, लेकिन 168 ओनली बिकॉज ऑफ वन मैन हार्दिक पांड्या। No, not because of one man. You have left out Virat Kohli's half century, so I disagree there. So the point is that Bantu was talking about 170 and they are 168, which is not a bad total at all. Okay, 168 is not a bad total at all, but what we were discussing earlier in the day also that possibly 180 के around हमें देखना चाहिए बंटू जी. Do you think we have fallen short of 10 runs, or should we be saying thank you we were able to make 167? Definitely we can ask, but still I feel it is a respectable total and good total to defend. Depends on the power play of first power play, how they use this power play, England. और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भारत की बात है कि अच्छे रन्स बना लिए हैं। हालांकि बीच में देखिए मिडिल ओवर्स में रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आफ्टर 15 ओवर्स जो रन्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट 68 रन्स बनाए हैं। दैट इज ऑल ड्यू टू विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त है। और पांड्या के जो सिक्सेस थे, जैसे रावत जी ने कहा कि बहुत बढ़िया फ्री हिट्स लगाई हैं, और वाकई ये फ्री हिट शो था जी। बंटू सिंह जी, 15 ओवर में हमारे 100 रन थे। क्या इंग्लैंड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, या फिर कहीं ना कहीं हम अपनी कैलकुलेशन में गड़बड़ा गए, क्योंकि हमने पहले पावर प्ले का कुछ खास यूज किया ही नहीं? देखिए, अभी तक अगर हम ओवरऑल देखें, पूरी इस टूर्नामेंट में देखें, तो इंडिया ने पावर प्ले में 30 to 40 रन ही बनाए हैं। और आज भी वही देखिए अर्ली विकेट जा रही है। हालांकि आज केएल राहुल का चला गया और रोहित शर्मा ठीक खेल रहे थे, लेकिन एट द एंड वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, अपनी इनिंग्स को पूरा यूज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जब पावर प्ले में 30-40 रन रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए टीम दबाव में आ जाती है, और वो दबाव को हैंडल किया, बहुत अच्छे होल्ड किए नर्व्स विराट कोहली ने, और उसके बाद पांड्या के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप का रिजल्ट है जो अब इस टाइम हम यहाँ पर खड़े हैं। A word for the English bowlers, Canon, today, especially Adil Rashid. I mean, they were outstanding today. I think they're all good. Adil Rashid has been the find of the tournament. I think he's bowling ahead of Moeen Ali. I think if you look at the power play for India, the first power play, they showed that they're capable of it. Englishmen, they play this kind of cricket throughout the season, back home. So, but yeah, Adil Rashid has been special. But first power play, they were throttling India. And I think after the start which Rohit got, he should have gone for more runs. He did not do that. But overall, they will be happy with this 168 because they won the toss. They chose to field. But if they were hoping that India would be restricted to 150 or something, that didn't happen. 168 is a competitive total. It's not an easy one to chase. But Kanan, as a opposition team, you learn from the mistakes or the positives that the first team has done during their first innings. So what would the Indian bowlers have learned from the English bowlers from the first innings, what to do or what not to do? I think there's nothing to learn. You just have to go and perform. That is going to be the nature of T20 cricket. It is so fast, One misfield, we saw, how it happened. And even the last ball, we saw how Hardik Pandya, his boot, rear of the heel, hit the wicket. Otherwise, that was 4 runs. He was 172 on board. So these are unfortunate things because he was being, basically batting off the back foot. But I think Indian bowlers know what is to be done. And if the prize open the top order of England take 2 wickets, the whole equation will change. राइट। और बंटू जी, क्या आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड की तरफ से ये बहुत ही वेल थॉट आउट डिसीजन था कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेंगे? एंड प्लस आप उसमें भी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे बल्लेबाज आज शॉट्स नहीं मार पा रहे थे? वाज इट पुअर शॉट सिलेक्शन और नॉट बीइंग एबल टू फेस द बॉल, और वाज द बॉलिंग ऑफ द इंग्लिश बॉलर्स? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। पहले तो जो उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करी है, वो एक सोचा समझा डिसीजन था। वो प्लान करके आए थे। दे आर डिटरमिन्ड बिफोर द गेम, और सब चीजें स्ट्रेटजी टीम मीटिंग्स में डिसाइड हो जाता है। लेकिन जहां तक ज्यादा रन नहीं कर पाए शुरू के ओवरों में, वो मैं कहूंगा कि गुड बॉलिंग बाय द इंग्लैंड बॉलर्स। और थोड़ा सा एक विकेट केएल राहुल के आउट होने से भी दबाव आ गया भारतीय टीम पे, और जहां पर थोड़ा सा उन्होंने लंबा खेलने की कोशिश की, और देखिए उसी का रिजल्ट है जो लास्ट के 5 ओवर्स में उन्होंने स्कोर कर दिया। Kanan, one stat that comes into mind, maybe you can just quickly respond to it. Out of the 8 innings, 5 times Bhuvneshwar has taken Butler. So how is that going to play on the mind? A damn good stat. I would like that to happen right now. But also, I think we have missed out one big point that
Kohli, 4th half century in this World Cup. Yes, indeed. We were talking about 42 runs being added by the man today, by the king, to make it 4,000 and become the quickest getter when it comes to making runs in T20s. 4,000 runs that we're talking of, and he went on to make a half century. But overall, I think with that also we are looking at bringing a closure to our show right now. अपने सारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे क्योंकि अब यहाँ से शुरू होगी the chase, the big chase that we're looking at. Will the Englishmen be able to chase 168, 169 required to win? Or we are... Free Hit 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है। एक और चौका भारत को मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहां पर। आपका अपना प्रिय चैनल आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए T20 वर्ल्ड कप 2022। भारत के सभी मैच FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले स्टेशंस, DRM और DTH पर, और अन्य मैचों की कमेंट्री LRS, FM रिले स्टेशंस, DRM और DTH पर। तो सुनना ना भूलें T20 वर्ल्ड कप का रोमांच सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है सुनील गुप्ता, अंग्रेजी में स्कोरर हैं जतिन सूद और स्टेटिस्टिशियन है मनोज कुमार। ये मैच बहुत ही दिलचस्प स्थिति में हो गया है। हम तो जानते हैं कि पहले जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था शुरू में बहुत मुश्किलें पड़ी और विकेट नियमित अंतराल से गिरते जा रहे थे और भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। विराट कोहली ने आज एक पेशेवर पारी खेली और हालांकि बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं पा रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी विकेट पर टिके रहे और भारत के हित में वो विकेट की रक्षा करते रहे और उन्होंने कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक स्कोर खड़ा किया भारत के लिए। और बाद में हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसने तो रोमांचित कर दिया। बैकफुट पर खड़े रहते थे और वहां से कुछ ऐसे आकर्षक स्ट्रोक्स खेले और लगता ही नहीं था कि एक समय जब 150 रन भी मुश्किल लग रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह से स्कोर को बढ़ाया और जितना सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं और भारतीय जो जिस तरह से पहले एक गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं, विश्वास दिलाते हैं एक दूसरे को, हम सबको मिलकर एक काम करना है और वो काम ये है कि भारतीय टीम को विजेता बनाना। ये होता है जब देश के खिलाफ खेलता है तब रोमांच अलग तरह का होता है। और दिलचस्पी इसलिए भी रिक्वायर्ड रन रेट जो है 8.45 चाहिए 169 रन बनाने जीतने के लिए। एक समय लगता था कि भारत ये मैच कैसे बचा पाएगा क्योंकि हालत इतनी बुरी हो गई थी, स्कोरबोर्ड पर जितने कम रन टंगे थे लगता ही नहीं था कि भारत कोई बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। 160 भी एक दूर की बॉडी नजर आने लगी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आखिरी में जिस तरह से मिलाकर जो स्ट्रोक्स लगाए और जितने छक्के और चौकों की झड़ी लगा दी उसने भारतीय टीम को, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के उन्होंने लगाए और पांड्या ने 63 रन 33 गेंदों में बना लिए और एक तरह से भारत को काफी हद तक आशा की एक लहर उन्होंने भारतीय खेमे में फैला दी। अब इंग्लैंड देखना है किस तरह से जवाब देता है। ये बड़ा मुकाबला है और मुकाबला बड़ा ही नहीं, मुकाबला कड़ा भी है। और हेल्स और बटलर ये दोनों काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। बटलर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, 32 वर्ष उनकी उम्र है। हम जानते हैं कि किस तरह के खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। इस विश्व कप में 4 पारियों में 119 रन बना चुके हैं, 33 के ऊपर का उनका औसत रहता है। अगर शुरुआत में बड़ी पारी खेल दी तो इंग्लैंड के लिए आशाएं बेशुमार हो जाएगी। और एलेक्स हेल्स भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 5 पारियां 125 रन 31.25 के औसत से रन बनाते हैं। और कुल मिलाकर भारतीय खेमे में भी एक आशा की भावना दिखाई दे रही है। भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग के लिए तैयार हैं, शुरू में गेंद को स्विंग कराने के लिए मशहूर हैं। 6 मैचों में 4 विकेट लिए, लेकिन शुरू में विकेट उखाड़ रहे हैं और 25 के औसत से इकोनॉमी रन रेट भी उनका काफी अच्छा है। और मेंस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का ये मुकाबला पता नहीं कितनी ही संभावनाओं को जन्म दे रहा है।
और देखा जाए तो जोस बटलर का भुवनेश्वर कुमार ने 5 बार विकेट लिया 13 पारियों में से। जब भी सामने खेलते हैं तो 13 पारियों में से 5 बार विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिया, और वो भुवनेश्वर कुमार अब सामने है, वो बॉलिंग कर रहे हैं। पहली गेंद की शुरुआत हो रही है और थोड़ा स्टेप्स चूके फिर से पीछे जा रहे हैं, और बटलर भी थोड़ा अलग हो गए थे, शायद उनकी एकाग्रता थोड़ी भंग हुई थी। अब वो सामना करेंगे। इंग्लैंड को फिर से बता देना चाहते हैं आपको कि 169 रन जीतने के लिए बनाने हैं 8.45 के उससे। भुवनेश्वर की पहली गेंद आउट स्विंगर थी, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, और कोई रन नहीं, खेलने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन काफी स्विंग हुई थी। स्विंग का अच्छा संकेत था, अच्छा लगा ये देखकर। और अच्छी बात ये कि भुवनेश्वर कुमार न केवल आउट स्विंगर करते हैं बल्कि इन स्विंगर भी करते हैं, अंदर की तरफ भी लाते हैं। तो बहुत बढ़िया बॉलर, असरदार बॉलर और अनुभवी बॉलर। आज अनुभव का तकाजा है कि वो अच्छी बॉलिंग करें भारत के लिए। But that was called a wide, and certainly to my mind it was not outside those indicative lines, and Paul Rifle called it a wide. I'm personally very surprised. बटलर ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, और भुवनेश्वर कुमार देखना है कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। ये वाइड कहा गया था तो आश्चर्य तो हुआ, उसको वाइड कह दिया गया था पिछली गेंद को। 1 रन इस तरह इंग्लैंड का बन गया। तो शुरुआत वाइड से हुई है इंग्लैंड की, और भुवनेश्वर कुमार जबकि लाइन के अंदर ही टप्पा खाया था। ये अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बढ़िया स्ट्रोक है। ऑफ स्टंप के बाहर थी, आउट स्विंगर थी, लेकिन इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों को स्विंग को खेलने की आदत है। स्विंग को नियंत्रित करके खेला ऑफ साइड में कवर की तरफ, स्विंग को भी एडजस्ट करके ऑफ साइड में कवर ड्राइव, 4 रन, बहुत ही खूबसूरत। Yes, he went to the ball. He didn't play from his standing position. He went to the ball and hit to the right of Srinagar. Yadav picked up the boundary. 5 runs of what is just the first delivery. So England getting a move on there at Adelaide. अगली गेंद ये अंदर की तरफ लाए, लेट स्विंग हुई थी इस गेंद को, ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई, और फिर भी बहुत अच्छी तरह से खेले अलेक्स। आखिरी वक्त तक अपने बैट पर देखा, कमजोर गेंद को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। और भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, और यहाँ पर तो जो आउट स्विंगर के बीच में इन स्विंगर का जो प्रयोग किया था उसने धोखा दिया था एलेक्स हेल्स को, इसमें कोई शंका की बात नहीं। लेकिन विकेट की तलाश कर रहे हैं भारतीय बॉलर। बटलर सामना कर रहे हैं, ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, और फिर उसी तरह का स्ट्रोक ऑफ साइड में कवर ड्राइव, 4 रन। क्या बढ़िया स्ट्रोक है, और शरीर से दूर खेल रहे, लेकिन फिर भी स्विंग को एडजस्ट करके, मैं तो समझता हूँ बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। Well, I mean, you just look at it. It was just slightly short of length, so really wasn't allowing the ball to swing. It was wide. All he had to do was get his back down on it. Once again, to the right of the man there at cover. Identical shot to the one that got him a boundary earlier. So 9 runs of England off and running in the very first over. ये ओवर पिच थी इस बार, लेकिन ड्राइव करने की कोशिश में चूक गए। ये वाइड ओवर पिच गेंद की थी, इसीलिए बल्ला लगा नहीं, बच गए। 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, हर रन महत्वपूर्ण है। ये मामूली मुकाबला नहीं है, विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला है, और मुझे मालूम है करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ती और घटती जाती हैं जैसे जैसे कोई विकेट गिरता है या रन बनता है। क्रिकेट का रोमांच ऐसे ही क्षण अक्सर पैदा करता रहता है। 2500 रन पूरे कर लिए जेस बटलर ने, और बहुत बढ़िया गेंद, ये गेंद बिल्कुल गेंद सीधी रह गई थी, और विकेट कीपर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा और स्टंप्स बिखेरने की कोशिश की। उनको लगा कि शायद बटलर आगे की तरफ निकल गए। दिलचस्प होगा फिर से देखना। विकेट कीपर ने कलेक्ट किया था और तुरंत ही थ्रो कर दिया स्टंप्स को बिखेरने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि बटलर का बैट आगे की तरफ है, और लेकिन आखिरी वक्त पर जैसे तैसे नीचे रखने में सफल हुए। तो 9 रन बन गए बिना किसी नुकसान के। बटलर सामना कर रहे हैं 8 रन पर। पहला ही ओवर चल रहा है। भुवनेश्वर कुमार बटलर को ये ओवर पिच थी, मिडिल लेग स्टंपर और कलाई के उपयोग से फ्लिक किया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। बहुत ही कमजोर गेंद, ओवर पिच थी, मिडिल लेग स्टंपर और आराम के साथ चौका मार दिया।
कलाई का उपयोग करके फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, और स्ट्रोक का टाइमिंग इतना बढ़िया था कि किसी के लिए कोई मौका नहीं। तो पहले ही ओवर्स में 13 रन बन गए। Yes, I'll ask Jatin to tell me how long it took India to reach 13. I think it was in the fourth over, the third over, certainly I remember. It was bowling that was not at its best from Bhuvneshwar Kumar. He was short outside the off stump and was able to beat the man at cover twice, Joss Butler, and then the next one full pitched on the pads and easily able to beat the man at mid-wicket. 3 boundaries in the very first over. How long did India take to get 3 boundaries, Jatin? I'd be interested in you telling me that, because I think it was quite a while that India got their first 3 boundaries. So really, the start that England were looking for, and as I said right at the beginning, it is the power play that's going to determine the fate of this match, because if England get away to a flyer, which certainly it seems as if they are going to be, doing just that, 13 runs of Bhuvneshwar Kumar, who's normally been fairly effective and certainly economical, if not picking up all the wickets. 4.2 overs to get 3 boundaries, and they got it in the very first one. This one getting the outside edge was Arshdeep now, bowling left arm over to Hales, gets the first ball, tries to turn it on the onside, gets the leading edge, and the ball flies away towards deep cover, picks up a single, and already you can see the Indian face is slightly down as England have motored on to 14 without loss. Butler on 12 of 6, 3 boundaries, as we see a replay of the last one off his pads, very nicely down towards deep mid wicket. So Bhuvneshwar not doing what he's been charged to do. And in that over, we saw a couple of interesting things. We saw Pant moving up to the wickets as Butler was moving down the track, and then after that moving back again. So a lot of shifting of the keeper, as 42 dot balls in the India innings out of 120. So that is 1/3, 42 dot balls. So that's something that I've always said is something that India need to look at. There's a slip and man short third man, no deep third. This one is once again off the edge and flying away down towards deep point. And once again a poor delivery wide outside the off stump, and not the start that India wanted, even though he gets applause from his captain, does Arshdeep Singh, and Butler motors on to 16 with 4 boundaries, and England are 18 without loss. All he had to do was open the face of the bat and guide it down towards deep point. There's nobody there. The man at third was very, very fine, and of course the man at square point was very square. So Arshdeep now getting a taste of Butler's abilities. There he goes, this one's down the leg side. It's going to be called to right. So we haven't seen India bowling at their best at this very crucial juncture. But still, of course, it's a long way to go. The target 169, but now down to just 150 of 18.4 overs. Certainly, I would say that England, much the happier team, even though they allowed India to get away slightly towards the end of their innings, but not the start that India wanted. If no wickets, you have to keep the runs down. They haven't done either, and England are already 19 without loss. There goes Arshdeep, comes in and bowls, and this one well played. They are across the face of the stumps, as it were, because it was pitched on the stumps straight to, I think, Ashwin, who picked up at square leg. All the bowlers then tried to take a single, but no single on offer. And England remained on 19 without loss. So a dot ball finally for India. We're counting the dot balls now, not the wickets. You can understand the type of pressure that England have already put in on India. Most wickets in overs 1 to 6. Arshdeep Singh, Tuscan Ahmed, Lungi Nagiri, and Blessing. I'll tell you his full name in a moment. That's a full toss and played away down to mid-off. Again, the ball hurled by Virat Kohli down towards the non-striker's end, telling Buck Hales to remain within his crease. But the face is grim, as it was a full toss. Could have been put away into the gap, but wasn't. As he tried to steal a single, and the ball came back at the rate of knots from Kohli. And he pointed at Hales and said, "Stay within the crease, stern look." The schoolmaster to the errant schoolboy at the non-striker's end. That's very interesting. Very good stuff there at the Adelaide Oval. There goes Arshdeep.
comes in and bowls. And this one is slightly slow delivery, played away down straight. This time isn't able to pick up the ball cleanly as they went through for a single, quick one. Ball went straight behind the bowler, and they were able to scramble that single. 20 without loss then. England coming up to the end of the second over, so already motoring along at about 10 runs and over. And what they needed at the start of the innings was 8.45. That was the slow delivery. Once again, got the bottom of the bat. And that's why it trickled behind the bowler for just a run. 7 runs of 5 deliveries so far. India desperately seeking a wicket. Even if it's Hales, who's only played the 1 delivery and picked up the 1 run, Butler would be even better. As here goes Ashdeep. This one's short of length and played away off the back foot, down to deep cover. Just a single on offer. No swing really there for Ashdeep, as England then after 2 overs at 21 without loss. 21 रन बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अभी शुरुआती क्षण है। एक आध विकेट अगर भारत ने झटक लिया तो मैच में तब्दीली हो सकती है। T20 क्रिकेट का चरित्र होता है कि अगर आप बल्लेबाज को खामोश रखना चाहते हैं तो उसका सही तरीका यही है कि आप विकेट लेते रहें। अगर आप विकेट लेने में सफल रहे तो फिर रनों की रफ्तार में अपने आप ब्रेक लग जाता है। कोशिश भारत की यही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी टीम भी मजबूत टीम है। इंग्लैंड की टीम बड़ा करारा प्रहार कर रही है और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरह से उन्होंने पहले फील्डिंग की, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह से उनके कप्तान ने योजनाएं बनाई, उसने भारत को काफी हद तक सीमित कर रखा है। भुवनेश्वर कुमार नए ओवर की पहली गेंद ये बाहर की तरफ निकली थी, बैट के बाहरी किनारे के बिल्कुल नजदीक से निकली। हेल्थ ने उसे कट करने की कोशिश की थी, बैट के बाहरी किनारे के नजदीक से निकलकर विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। विराट कोहली लगातार बात करते हुए रोहित के साथ कि क्या करना चाहिए अपनी टीम को। ये टीम भावना भारत में अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन टीम को एक इकाई की तरह खेलते देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। और उनके साथ में राहुल द्रविड़ जैसे कोच भी हैं। ये ट्राई किया ऑन द राइज, ऑफ साइड में कवर की तरफ 1 रन और मिलेगा और कदमों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि स्विंग को नेगेट कर दें, आगे बढ़कर खेल रहे हैं और खासकर हेल्थ तो इसी तरह से खेलते हैं, आगे निकल जाते हैं, स्विंग को एक तरह से निरस्त करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। बटलर 17 रन पर खेल रहे हैं, एक तूफानी शुरुआत उन्होंने दी है। सबसे अच्छी बात है ऑथेंटिक स्ट्रोक्स, जिसे कहते हैं विश्वसनीय स्ट्रोक, जो क्रिकेट में खेले जाते हैं उस तरह के स्ट्रोक्स वो खेले और उन्होंने कोई ऐसी जल्दबाजी या ताकत पर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। गैप्स में खेल रहे हैं, यहाँ भी एक बार फिर से ऑफ साइड में खेला, डीप कवर की तरफ 1 रन और जोड़ लिया। रनों की रफ्तार को पहले ही उन्होंने तेज कर दिया था, तो बहुत ज्यादा उलझने उनके मन में नहीं है। और आज के माइलस्टोन्स अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है। हेल्स अगर 2000 रन अगर पूरे करना चाहते हैं T20 क्रिकेट में तो 10 रन उनको चाहिए और अली जो है, मोइन अली, 500 रन पूरे करने के लिए उनको 4 रन चाहिए। ये आंकड़ों का खेल है। क्रिकेट जो है आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे साथ जतिन सूद स्कोरर और मनोज कुमार स्टेटिस्टिशियन इस काम में महारत हासिल किए हुए हैं। हमेशा उपयोगी इंफॉर्मेशन हमको देते रहते। अगली गेंदें ओवर पिच थी और जानबूझकर उनको मालूम था कि गेंद की पिच तक नहीं, फिर भी कलाई के उपयोग से उठाया ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ 2 रन उन्होंने और ले दिए। तो प्रत्येक रन के साथ इंग्लैंड की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन अभी फिर भी मैं कहूंगा कि शुरुआती क्षण है। पहला पावर प्ले चल रहा है। हम जानते हैं कि पहले पावर प्ले के 6 ओवर्स में 30 गज के दायरे के बाहर केवल 2 ही फील्डर्स खड़े रहते हैं। उसका फायदा उठाने की बैट्समैन कोशिश करता है और जानबूझकर, और हिल्स को हमने देखा था, ये खेल रहे एक बार फिर से ऊंचा उठाकर खेला है ऑफ साइड में 6 रन के लिए। क्या बढ़िया एफर्टलेस तरीके से, बिल्कुल कोशिश ही नहीं की, लेकिन करारा छक्का। उनको मालूम था ऊंचा उठाकर खेलना है और ऊंचा उठाकर खेलने में सफल भी हुए। लॉग ऑफ के ऊपर से लंबी बाउंड्री चुनी, लेकिन ताकत और टाइमिंग इतना बढ़िया था कि 6 रन सीधा बाउंड्री। धीमी गेंद थी लेकिन खेल दिया खूबसूरती के साथ 6 रन। Hitting through the line over the man, a bit of 6 runs. बहुत बढ़िया स्ट्रोक और प्रशंसा करनी होगी जिस तरह से वो खेल को प्रतिद्वंद्वी के खेमे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से 31 रन बन गए, तीसरा ओवर ही चल रहा।
अगले गेंद और इस बार फिर ऑन साइड में खेला, इस बार मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद जा रही है, हालांकि टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, बाउंड्री लाइन को तो नहीं छुएगी, अंदर गेंद को फीड कर दिया गया। तो 3 ओवर समाप्त हुए, 2 रन उस गेंद पर बने और 3 ओवर्स में 33 रन बिना किसी नुकसान के। इंग्लैंड बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत, बहुत ही ताकतवर शुरुआत, बहुत ही विश्वसनीय शुरुआत। I think that's the word really, full of confidence. They've been on the ball, they've got the gaps, very few dot balls, and just to give you an idea of the comparisons, India after 3 overs were 11 for 1 and England are 33 without loss. No comparison whatsoever. So even I use the word comparison, all I can say is that there is no comparison. 33 for none after 3, going at 11 and over, and Bhuvneshwar Kumar looking a shadow of what we know him to be. 25 runs in the first 2 overs, including a 6 and 3 boundaries, if I remember correctly. And Arshdeep Singh also not really getting any swing of the ball. But that's it. When you start putting the pressure on the bowlers from ball 1, that's when they wilt. And India were not able to do that, as Wokes and Stokes had done. Very, very good stuff. This time it's picked up in the air. It's been a change of bowling. It's Akshar Patel. Comes in bowled slightly short of length into Jos Buttler, who just steps back and nonchalantly lifts the ball over extra cover down to the boundary for 4 runs. They're going to make this look very easy right now, are England. And India really is staring down the barrel, if one can use that phrase. Here goes Akshar, comes in and bowls. It's in the air once again. Is it going to be caught? No, it's not. Just over Pandya there, who has to run back from extra cover. As he was beaten in the air, there was Jos Buttler. Went through with the shot. The ball was lobbed in the air, but just over the man at extra cover. As he ran back about 20 yards with the ball eluding him. Didn't get a hand to it at all. And Pandya looks distraught, but he was able to beat the batsman Buttler. Here's Hales now. And this one gets ball that comes back into him, which is really what he does most of the time, Akshar Patel. Hasn't had the best of tournaments so far. But can he, as I said, redress that balance, change the tone of the way the game is going right now? Slightly short of length and forced off the backboard down towards deep mid-on. But deep mid-on is very, very deep. And once again, that's Rahul, who isn't able to pick up cleanly enough, but he was right on the edge of the 30-yard circle and allowed an easy boundary to go through. Rohit Sharma, even though he applauds the fielder and the bowler, his heart must be down in his shoes. Here goes Hardik Pandya. This one goes on the back foot, slightly short of length once again, as beg your pardon, Akshar Patel. What am I saying? Akshar Patel, thank you, Jatin. Getting a bit carried away myself. 40 without loss then. And India reached 40, I think it was after the power play, if I recall correctly. In the 8th over, already in the 4th over, England are at 40 without any wicket. 40 no loss. Coming up to the end of the 4th over, here goes Akshar Patel, once again forced off the back foot down to mid-wicket and into the gap, picks up a single. How many dot deliveries have England played in the 4 overs? Just 7. And I dare say that India must have played at least 17 in the first 4. That really is, to my mind, the big difference. Already England 41 for no loss after 4 overs, going at a rate of 10 per over. And Sushil, I think the writing beginning to appear on the wall. मुश्किल तो है परिस्थितियां, देखिए, और बॉलर्स के लिए कोई मदद दिख नहीं रही, स्विंग हो नहीं रही है गेंद, और बॉलर्स वो सही लाइन पर गेंद कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं शुरू से जानता था कि बटलर और हेल्थ जिस तरह से खेलते हैं, वो आगे बढ़कर खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि गेंद को प्रतिद्वंद्वी के खेमे में ले जाए। और हमेशा हमने देखा है कि 6 ओवर्स में उन्होंने बहुत रन बनाए। दोनों उसका पूरा फायदा उठाते हैं पावर प्ले का, और बॉटम एंड का अच्छा उपयोग करने में सफल होते हैं। और हेल्स तो खास करके इस टूर्नामेंट में एक आंखें खोल देने वाला प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंग्लैंड ने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन अभी भी काफी खेल होना बाकी है, और अभी भी 1-2 विकेट अगर ले दिए तो तनाव बढ़ सकता है। हमने देखा था इंग्लैंड को संघर्ष करते हुए कई टीमों के खिलाफ, लेकिन फिलहाल तो किसी तरह की परेशानी नहीं दिख रही। देखिए, आप चकमा तो देते हैं ना, अगर आप चकमा देते जा रहे हैं बल्लेबाज को, तो आपको आशा बनती है कि कहीं ना कहीं से कुछ निकलेगा। लेकिन जिस आसानी के साथ खेलते हैं,
उससे लगता नहीं कि इंग्लैंड को ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल है, T20 का खेल है, परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ बदलती हैं, दबाव बहुत कुछ गलत सलत करने पर मजबूर कर देता है। तो देखना है कि क्या भारत वापसी कर पाएगा। शबी को बली के लिए ले आया, पहली गेंद उनकी डॉट बॉल रही, दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। शबी ये ऊंचा उठाकर खेला है, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर कोई फील्डर तो है नहीं, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक बार फिर से हेल्स ने वही करिश्मा दिखाया, 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और लॉन्ग ऑफ लंबी बाउंड्री, हम बार बार कह रहे हैं कि ओवल का मैदान है, ओवल का मतलब ही होता है, और बॉटम हेड का इतना बढ़िया उपयोग किया था, क्रीज की गहराई में चले गए थे और बहुत ही सुंदरता के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 85 मीटर लंबी बाउंड्री दूर कर दी उन्होंने और छक्का लगा लिया अपनी टीम के लिए। 47 पर पहुंच गए इंग्लैंड और हिल्स पहुंच गए 21 रन पर। शमी की अगली गेंद और बैकफुट पर जाकर धीरे से पुश किया, रन लेना चाहते थे, अच्छा हुआ समय पर वापस आ गए, रन था नहीं, मिड ऑन पर गेंद सीधी गई थी और शमी ने इस गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट रख दिया था। उन्होंने देख लिया था कि आगे बढ़कर उठाकर खेल रहे हैं गेंद को, तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ कर दी थी, तो बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया। लेकिन जो छक्का लगाया था, अपना पैर अलग कर लिया था, लेग साइड में हट गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बना ली और फिर सीधा खेल दिया। मैं समझता हूँ T20 में ये बुद्धिमानी की बल्लेबाजी कही जाएगी। 5वां ओवर चल रहा है, 47 रन बन चुके हैं इंग्लैंड के। अगली गेंद लेग साइड में थी और पैड पर लगी, सीम के सहारे कट होकर अंदर की तरफ आई थी, लेग साइड में स्विंग करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन पैड पर लगी और कोई रन नहीं। अब 92 गेंदों पर इंग्लैंड को जीतने के लिए 122 रन चाहिए, क्योंकि 47 रन बना चुका है बिना किसी नुकसान के। हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि टॉस जीता था इंग्लैंड ने और पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था भारत को। काफी हद तक स्थितियां उन्होंने नियंत्रण में रख रखी है। शमी से काफी कुछ आशाएं कि शायद वो ब्रेक थ्रू दें, इसके लिए वो काफी लोकप्रिय भी हैं। देखना है कि वो काम कर गुजरते हैं अथवा नहीं। अगले गेंद और इस बार बैट का बाहरी हिस्सा लगा और थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, बहुत ही किस्मत वाले 4 रन और 50 रन भी पूरे हो गए इंग्लैंड के। हेल्स ने स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश की थी, ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की बाउंड्री की तरफ चली गई, ऊंची, वहां पर कोई फील्डर तो था नहीं। ये अच्छी गेंदों का भी ये हश्र होता है, T20 क्रिकेट है साहब। Yes, well, I think you've got to change the thinking of the attack right now. You're giving them pace, 51 of 31 deliveries, and India got to their 47 deliveries. You can just understand what the change has been. This one was a much better delivery. It was the Yorker from Shami. He was able to dig it out to mid-wicket, pick up a single, 52 of 5 deliveries, and still 1 over the power play to go. तो जाइए सदिया बेगम मेरी एक 58 for no loss. I dare say the match is now trickling away from Indian hands. This is
slightly short of length and fade away off the back foots, wide of mid-on, and single on offer allows England to move on to 59 without cross. Remember, we're still in the power play. 3 overs of the sixth, 3 deliveries of the sixth over still to go. Hales on 33 of 19, Butler 24 of 14, and I think Rohit Sharma's face. You can also see the writing beginning to appear, as I said, on the wall, which is not very far away. The win predictor, India only 22%, England 78%. Now, unless India pick up a hat-trick of 3 or 4 wickets in the next couple of overs, I dare say that it's going to be curtains good. Then England can cruise. They don't need to take any risks whatsoever. And India will have to work very hard to pick up the wickets. Here goes Akshar Patel, comes in and goes. He's slightly short of length and hits the ball in the air, but doesn't get hold of it, and it falls just short of mid-wicket. As Pandya tries to gee up the troops, Lordy trying to get them, say, come on, get going. A couple of wickets over here, we can change the course of this innings. Grim faces all around, and this one once again a slow delivery, better delivery, as he couldn't make any pace off the wicket. There, Alex Hales had to push the ball into extra cover, and 2 dot deliveries on the trot. Can't remember when that last happened in quite a while. As last ball of the power play comes up, it's England 59. Comes in both, slightly short of length, pulled away in the air, down deep at wicket. 4 runs, easy pickings there. 63 without loss. Hand pump, fist pump by Alex Hales and Joss Butler. 63 for no loss in 6 overs. England well on the way. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global rights holders. गजब की बल्लेबाजी कर रहा है इंग्लैंड, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और भारतीय बॉलिंग फीकी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, 10 रन के ऊपर का औसत ले रहे हैं पावर प्ले में, और सभी बॉलर्स को जिस तरह से मार पड़ी है, उसको कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड अपने पक्ष में इस खेल को बहुत तेजी के साथ ले रहा है। हालांकि अभी भी मंजिल दूर है इंग्लैंड के लिए। भारतीय टीम के लिए हमने देखा था कि पांड्या ने सभी को, खिलाड़ियों को तालियां बजाकर प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी कि भाई अपने कंधे झुकाने की जरूरत नहीं, अभी भी खेल कोशिशें अच्छी करनी पड़ेगी, बेहतर बॉलिंग का प्रदर्शन करना पड़ेगा, 1-2 विकेट सबसे पहले चटकाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही कुछ खेल में तब्दीली आ सकेगी। कुल मिलाकर भारत मुश्किल परिस्थितियों में फंस गया है इस सेमीफाइनल में, और इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा है, इस पूरी टूर्नामेंट में इंग्लैंड एक विजेता की तरह खेल रहा है। एक मैच में जरूर रेन के कारण या बारिश के कारण अफेक्ट हो गया था, उसमें आयरलैंड के सामने उनको पराजय हाथ लगी थी, लेकिन वो उसमें बारिश का बहुत खुश हाथ था। लेकिन उसके अलावा जिस तरह का खेल उन्होंने खेला, ऑस्ट्रेलिया को अच्छी टीमों को पराजित किया, और खुद को सेमीफाइनल में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ लौटाया। उनकी टीम काफी संतुलित लगा था। हम देख रहे हैं उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी, उनकी बल्लेबाजी कितनी संतुलित नजर आ रही है, उसमें काफी गहराई नजर आ रही है, और उन्होंने आज फील्डिंग भी अच्छी की। और इंग्लैंड हमेशा, कहते हैं ना, ब्रिटिश माइंड हमेशा योजनाओं में बहुत आगे रहता है। जैसी जैसी योजनाएं उन्होंने बनाई, उसको बराबर मैदान पर वैसी ही अवतरित की। और एडिलेड पर चूंकि स्पिनर्स को मदद मिलती है, ये सोचकर शायद उन्होंने खिलाया होगा अक्षर पटेल को, और अब अश्विन को लाया जा रहा है बॉलिंग के लिए, और वो बॉलिंग करें हेल्स को, और हेल्स ने पुश किया ऑन साइड में, पहली गेंद को मिड ऑन की तरफ लॉन्ग ऑन से आकर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन आसानी के साथ मिल गया। रन बहुत ही आसानी के साथ बढ़ रहे हैं, और मुश्किलें बिल्कुल नहीं पड़ रही, गेंद बल्ले को बीट नहीं कर रही है, इस कारण भी मुश्किलें दिखाई दे रही है। और जिस तरह से पावर प्ले का फायदा उठाकर ऊंचे उठाकर स्ट्रोक्स लगाए गए, और हेल्स की शुरुआत धीमी की थी, बाद में बटलर से आगे निकलते हैं, 34 रन पर खेलते हैं, और इस बार शॉर्ट पिच और बैकफुट पर जाकर पुल करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से अश्विन यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं। ये ऑफ ब्रेक थी, देखना है कि बैक से लगी अथवा नहीं, पैड से लगकर ऊंची थी, और अंपायर ने तुरंत ही ला कर दिया। हालांकि विकेट कीपर ने लिया था, हल्की सी अपील भी की थी, खुद मुस्कुरा रहे, कप्तान भी मुस्कुरा रहे, उनको मालूम है कि पैड पर लगकर ही कैच किया था। 64 रन बिना किसी नुकसान के अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं। ये पहला ही ओवर है, ताइनात से ओवर द विकेट उन्होंने बॉलिंग की, लेग साइड में गई थी, और शॉर्ट साइड लेग पर फील्डर के पास जा रही थी, लेकिन वहां से गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन और बच गया।
रन बहुत ही आसानी है, वाइड के रूप में दिया गया। और अश्विन कह रहे हैं वाइड कैसे हुई, देखना होगा एक बार फिर से। पैड से लगकर गई थी और इसीलिए उनकी निराशा बड़ी साफ थी कि जो पैर पर लगकर गई वो वाइड कैसे हो सकती है। मुझे भी यही लगा था शुरू में, पैर पर लगकर ही गई। अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, ऑफ ब्रेक, मुश्किल में पड़े, ऑफर मिडिल स्टंप पर थी, लेकिन चूंकि विकेट धीमा है इंतजार करते रहे, बैट से खुद आई, गेंद टकराई गेंद का और आराम के साथ स्कोर लोग की तरफ चली गई थी। एक रन और ले दिया। एक रन तो जब चाह रहे हैं बल्लेबाज ले रहे हैं। अश्विन गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं। एक बार ऑफ ब्रेक के ऑफ स्टंप के बाहर जगह देखकर उन्होंने ऑफ साइड में पुश किया केवल डीपिश पॉइंट की तरफ और एक रन और ले दिया। तो लगातार रन बढ़ते जा रहे हैं। अश्विन की अभी तक हमने वो जो गेंद बाहर की तरफ निकलती है वो देखी नहीं, कैरम बॉल जिसको हम कहते हैं वो देखी नहीं है। देखना है कि वो होती है और इस बार उठा दिया विद द टाइड, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। एक बार फिर से विद द टाइड जिसको कहते हैं ना कि जहां वो पिच गिरी उसी पर वहीं से उठा दिया पिच जहां पर गिरी थी गेंद और 6 रन कह रहे हैं लोग, लेकिन देखना होगा। अंपायर देखना चाहते हैं कि 6 रन हुए थे कि नहीं और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पर टकराई, यानी कि 6 रन हो गए। बाउंड्री लाइन की उस पर टकराई जो आसपास रस्सी लगी रहती है और 6 रन अब अंपायर ने दे दिए। तो बहुत तेजी से रन बना रहे हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इन्होंने ऊपर उठाया। अगली गेंद को पुश किया ऑफ साइड में मिड ऑफ की तरफ और 1 रन दे दिए। इसको कहते हैं, यहाँ भी देखिए तेज स्ट्रोक लगा सकते थे लेकिन जिम्मेदारी महसूस करते हुए स्ट्रोक की कीमत समझते हुए उन्होंने केवल पुश किया ऑफ साइड में मिड ऑफ की तरफ और 1 रन दे दिया। तो स्कोर हुआ 75 रन बिना किसी नुकसान के, इंग्लैंड जीत की तरफ अग्रसर है। Yes, they haven't let the momentum tag at all, have England. They've gone 10 runs and over right from the start, and 75 without loss after 7. Really, 94 from 78 deliveries. India haven't even picked up a wicket, haven't looked like picking up a wicket, and that perhaps would be the more worrying thing. We haven't seen swing, we haven't seen flight, really outbowled more than anything else have been India so far in the evidence that we've seen in the 7 overs. Here goes Akshay Patel into his 3rd over, none for 19, slightly shorter length and close off the back foot to extra cover by Hayes, who was in 42-24 and really coming into his own in this tournament. He was out of the England team for quite some time due to some misdemeanors, but nevertheless making a comeback at slightly shorter length and pulled away down over deep mid wicket, 6 runs, just short of length, picking up the length so quickly there was Alex Hales and clobbering it over deep mid wicket for 6. You've seen a 6 or a boundary in every over so far that India have bowled, and you can see that they're so short back from Akshay Patel. I think even the spinners, I mean the Indian spinners are the more vaulted spinners, the England spinners have been bowled much better today on the evidence that we've seen. This only delivery really was slightly slower, but slightly right up to the batsman, and that is what beat the batter outside the off stump as he tried to push the ball. So a couple of times you've seen the ball beating the bat, but nothing really to make the batsman worry or the England team wonder. Next ball again, slightly shorter length and pushed off back foot to extra cover, picks up a single. Does Hales, moves on to 49 and Butler on 29. Happy to watch the pyrotechnics from the other end as England now 82 without loss. I dare say it's really, as we say, the formalities to be played is slightly shorter length coming back in. Butler who cuts it away down to square cover. Ashwin picks up and there's a single run after. Last ball in coming up on 3rd over, going already at 9 runs and over is Akshay Patel. As I said, it wasn't lit up the World Cup before. You can see Virat Kohli, Hardik Pandya, all of them, Bhuvneshwar Kumar and Rahul Dravid, certainly looking very, let's say, displeased with what is going on in the middle. But at the end of the day, you select your team, you select how they play, and England move on to 84 without loss. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global rights holders. Alex
सेल्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। बटलर 30 रन पर खेल रहे हैं, 84 रन बन चुके हैं इंग्लैंड के बिना किसी नुकसान के, यानी आधे के करीब रन बन चुके हैं। लक्ष्य 169 का है, 85 रन केवल और चाहिए जीतने के लिए। सबसे बड़ी बात, 10वां विकेट अभी आपके हाथ में है। इंग्लैंड एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में आता जा रहा है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। सवाल ये, भारतीय टीम कोशिश तो कर रही, और ये आश्चर्य होता है कि इंग्लैंड के स्पिनर्स ने यहाँ पर बढ़िया काम किया, लेकिन भारतीय स्पिनर जो ज्यादा जाने माने हैं, जो ज्यादा जिनकी पहचान स्थापित है, जिनकी ज्यादा मान्यता है, लेकिन वो अभी तक कोई ऐसा प्रभाव जमा नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय स्पिनर्स अपने रंग में आएंगे, देखने की बात होगी। कुल मिलाकर फिलहाल तो इंग्लैंड का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है और भारत की आशाएं कम होती जा रही हैं। विश्व कप का सेमीफाइनल का मुकाबला है, आशाएं बहुत रही हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं। और शॉर्ट पिच को ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ पुल किया, हार्दिक पांड्या बॉलिंग के लिए आए हैं, पुल कर दिया, बट 1 रन लेने में सफलता हासिल की है इसने। तो हार्दिक पांड्या की जो विशेषता बॉलिंग है, वो शॉर्ट पिच गेंदें ज्यादा करते हैं, जमीन पर जोर से मारते हैं, गेंद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, कभी सीम पर मारते हैं और कभी क्रॉस सीम से गेंद करते हैं विविधता के तौर पर, कभी धीमे गेंद कर देते हैं। तो तमाम विविधताएं शॉर्ट पिच गेंदों पर ही करते हैं। तो ये एक उनकी विशेषता रही, देखना है कि कितने सफल होते हैं। अगली गेंद इस बार उन्होंने स्कूप कर दिया, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है बटलर द्वारा, लेकिन वहां पर फील्डर है और दूसरा रन आराम के साथ ले लेंगे। और उन्होंने थ्रो जो किया था एक दूसरे को देने के बजाय तीसरी तरफ कर देते रिले थ्रो देने के बाद, ये तो बड़ा हास्यास्पद काम हो गया। और जहाँ एक भी रन नहीं बनना चाहिए था, वहां 4 रन दौड़कर बना दिए, ये तो बड़ा आश्चर्य, ऐसा तो क्रिकेट में बरसों में देखा नहीं गया। 2 runs were on that way because Shami had to run to his right, but then pick it up and throw it to the fielder who come with him. I mean, that is ridiculous. You could have just thrown the ball back. And that is not something that Rohit Sharma telling me exactly the same thing. So I mean, they're just giving runs away in sloppy fielding and let's say not up to the mark bowling. This one tries to cut the ball. The ball goes with slightly inside edge this time. A little bit of movement of the seam. England still 89 without loss. नवासी रन बिना किसी नुकसान के। अब 80 रन और चाहिए जीतने के लिए। 9वां ओवर चल रहा है और हार्दिक बॉलिंग कर रहे हैं बटलर को। दाहिने हाथ से ओवर विकेट ऊंचा उठाकर मारा, ऑफ साइड में पॉइंट की तरफ फील्डर है, डीप स्क्वायर पॉइंट की तरफ, लेकिन वहां से गेंद को फीड करके उसके पहले 2 रन देने का मौका मिल गया इंग्लैंड को। रन बहुत ही आसानी के साथ बन रहे हैं। भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और उनके कोच जो दिखाई दे रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, उनके चेहरे पर थोड़ी निराशा छाई हुई दिखाई दे रही है। 9वां ओवर चल रहा है, 91 रन बच चुके हैं। टारगेट लक्ष्य जो है 169 रनों का। बटलर 36 रन पर खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की अगली गेंद, ये चाहते थोड़ा रन आउट करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि चेतावनी की तरह रुक गए और वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्कर। बॉलिंग देखी जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 25 रन दिए, अर्शदीप ने 1 ओवर में 8 रन दिए, अक्षर पटेल काफी महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 28 रन दिए, शमी ने 1 ओवर में 11 रन दिए, अश्विन ने भी 1 ओवर में 12 रन दे दिए। तो सभी बॉलर्स महंगे साबित हुए और इसके पीछे कहानी नहीं तो बॉलर्स ने वैसी बॉलिंग नहीं की जैसी की अपेक्षा की जा रही थी। और दूसरी बात, बटलर और हिल्स ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से भारतीय बॉलिंग की धार को मोटा कर दिया। 91 रन बना दिए अभी तक दोनों ने भागीदारी में। पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं बटलर को, वो गेंद औसत के बाद थोड़ी हाथ चलाने की जगह कट किया, लेकिन पॉइंट पर फील्डिंग बहुत ही अच्छी की गई, कोई रन नहीं। भारतीय टीम कोशिश कर रही कहीं से एक विकेट टपक जाए, चाहे फील्डिंग से ही टपक जाए, लेकिन कहीं से टपके, लेकिन विकेट आ नहीं रहा है।
ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया खेलते और इसी कारण ये खेल काफी एक तरफा हो रहा है। हमने पहला सेमीफाइनल भी देखा था जब पाकिस्तान खेल रहा था न्यूजीलैंड से, तो काफी एक तरफा हो गया था। ये अगली गेंद ये चकमा खा गए, बैट के बाहरी किनारे के बिल्कुल नजदीक से निकल गई। बढ़िया गेंद थी, शायद शॉर्ट पिच गेंद समझ रहे थे कि आएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और ये ओवर की समाप्ति 91 रन की वजह से नुकसान की निकली। The most economical over of the England innings. I think, but give away 7 runs. So you just understand the type of, what should I say, the absolute total command that the England batsmen have exercised on the Indian bowling. I think he's the only Indian all-rounder who has scored 1,000 runs and captured 50 wickets in T20 internationals. Thank you, Manoj Kumar. That doesn't give us that much confidence because it's a long. England have to score 78 runs in 11 overs, and the way that they're going, as I said, unless there is some sort of miraculous wicket-taking abilities shown by the Indian bowlers so far, I don't think that is going to be a problem whatsoever with 10 wickets in hand. You said take wicket kapkai. You can only have some kapkai if there is some बादल वहाँ पर, कोई बादल भी नहीं है वहाँ, तो कहाँ से बारिश टपकेगी? सुशील नहीं, वो नहीं होगा, अभी तक तो नहीं होगा, तो कोई there is no chance, at least to my mind, the way that India are bowling, I don't think that there has been enough pressure applied in any over so far. When you're doing it 91 overs, 91 at 9 overs, 10 runs and over, you cannot say that there's been any pressure applied whatsoever. So there you are. I mean, England has 7 pole position. Yes, it's a game of cricket. Yes, stranger things have been known to happen. But I think there will be a lot of debate in team composition after this, the way that things are going. One, of course, does not want to give up hope to the last ball is bowled. But the way things are going, certainly it seems it's England's game to lose rather than India's game to win. Why did you not play the leg spinner? You've seen 2 leg spinners operate so well for England, Adil Rashid, even the part-time leg spinner, Ian Livingston, and only 1 more over required for result. Yes, thank you. That is it. Rain does indeed come down. And thank you. India will be happy to get off the field because then it will be a DLS win rather than a 10-wicket win. The way it looks right now, I mean, India, I don't know where they're going to pick up the wicket. Yes, the odd ball does beat the bat, but that's about it. Nothing has gone to hand. Anything that goes into the outfield, and certainly the amount of dot balls that have been played by England allows Jadeja to get just 19 in 9 overs. And I think India played 42 dot balls in their entire innings. So you can just imagine with just 11 overs to go. That's the way that you've got to control a run chase. You first put on the pressure, very first over, 3 boundaries, and then India on the back foot straight away. Nevertheless, a slight hold up in play as Rishabh Pant is getting some cricket on the field. Remember, he's not played too much in this T20 World Cup. So time to bring you up if you just tuned in. And if you just tuned in, if you're an Indian fan, you may not want to hear what we're going to be telling you. But the fact that England are 91 without loss, chasing 169 to win. And their 91 has come only in 9 overs. So England, as I said, well on the way to the MCG. And India, well, thinking of packing their bags. I think there will be some talk about the way that India opened their innings in the game so far. Not really got an opening stand going. Not really been able to put the pace on the first couple of wickets that have played. It's the middle order that has given them the scores at least that they can try and defend. And it takes you back to that match, Sushil, at the World Cup last year, which was played in Dubai, when India put on 152 against Pakistan, and Pakistan won by 10 wickets. Very similar situation because they went straight head on. As you can see, there you are. I got it. In fact, Jatin was showing me that particular that statistic, 151 to 7 here in India, not 152, but Pakistan scored that 152 without loss, and that's what it takes you back to. The 10th over then coming up, and Harshdeep bowling his second. Comes in and bowls it slightly short of length in the air, clattered away down to Apex to cover 4 runs. It's almost like playing in the nets. Really, nothing there in the batting, in the bowling, no swing, no change of pace. Even though it was a slow delivery, but it was just easy pickings. So deep in his face and hammered it off the back foot. Nobody in the way.
Slightly short of length, it was a slow delivery, but my goodness me. Now he's got absolutely his eyes set, and he's going to make the most of this. Never seen a century in this series. Let's see, he's a 55 of 30. England have 74 runs to get. If he gets 45 goes the way he's going, well, might make a century in this semi-final. What a century it will be propelling England into the final. Yes, I know I'm hatching my eggs before they're hatched, or they rather, whatever they are, whatever the phrase is. Couching my eggs before they're hatched, but nevertheless, I'm still couching. They're counting the runs down. 95 to that plus. There goes Ashby. Now around the wicket. Comes in and goes, and this one is flicked down towards deep backward square leg. So Mariada picks it up, holds it in, just the run and offer. That wicket of Surya Kumar Yadav actually, which was picked up by Adil Rashid, bowling a very slow leg spin outside the off stump, and he was caught at a deep point. Because he stepped away from the ball and got the outside edge. I think it was, by mine, the turning point of the game. So, what do we see? It is 96 run loss. Are we going to see a 100-run opening stand? Certainly the way things are, it looks as if it's going to be there. Dinesh Karthik sat out this game. Rishabh Pant came in his place. Had only about 10 point movements to face. There goes the drive to crease. Was Harshdeep. The ball was hit back with Bedham, trying to get his foot to it. And he got his foot to it. It might have been a run out to the non-striker's end, but didn't get his foot to it. The ball hit. The Stubbs becoming a welcome 12th fielder for India. They need all the fielders they can get. Couldn't get his foot to it as Alex Hedges was way out of his crease. And had he got his foot to it, I mean, it would be the first wicket, but really unlucky. He would have been setting up the way that India would have watched to pick up a wicket, so they're desperate for a wicket in any case. Butler on 36 and 50, like I say, 36 and 26, it's a date. And you get 56 and 31. Well, it is a date. Goes wide the piece, it's got forced off the back foot to extra cover. And two drop balls once again on the clock. Robert chewing gum ferociously in the dugout, making copious notes. What those notes are going to contain, but I guess we'll only know after this game, or whether we know them at all. Required run rate just over 7. 10 wickets in hand. And Dinesh Karthik, I think, talking to Hardik Pandya about what they're going to do after this game. Had a good chat, perhaps, about that. Let's see if we can make it 3 dots in the clock for a slightly new record in this innings. There goes Harshdeep coming to Butler around the wicket, but then goes that short of length, pulled away down towards deep mid wicket. It wasn't 3 dots in the clock, unfortunately, just a single. Nevertheless, we move on to 97 without loss. Fielder we poured in from deep mid wicket. Hales at 56 now. And, well, what shall one say? Very difficult to get commentary now. It's Salt with a strike rate of 164, Stokes with a strike rate of 130, Brook with a strike rate of 142, Ali with a strike rate of 148, Livingston with a strike rate of 148, following. I really think there's going to be some sort of change of weather that takes place at Adelaide. India to make a comeback in this semi-final. Slightly short of length and pushed away to the right of extra cover, pick up the signal, and we'll move on to 98 without loss. The only thing that we can say, Sushil, is that they've fallen under 10 runs and over for the first time in the game. कुल मिलाकर भारतीय बोलिंग काफी रंगहीन, काफी स्वादहीन और काफी फीकी रही और इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने जो रंग और जो तेवर दिखाए शुरू से वो तेवर अभी भी कायम दिखाई दे रहे हैं। एक विजेता टीम की तरह दिखाई दे रही है और भारतीयों से बेहतर प्रदर्शन की सभी को उम्मीद थी और जिस तरह से खेल रही थी भारतीय टीम। लेकिन ये भी कहना होगा कि भारत ने कड़े मुकाबले अपने
जो उनका जो फील्ड था उसमें कड़े मुकाबले नहीं खेले। एकमात्र बड़ा मुकाबला साउथ अफ्रीका से खेला तो उसमें पराजित हुए, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ था बड़ा मुकाबला तो वो भी आखिरी में जाकर बिल्कुल हार को जीत में तब्दील किया था, तो उससे जीते। लेकिन बड़े टीमों के सामने उनके मुकाबले नहीं हुए, और जहाँ पहली बार ये बड़ी टीम सामने आई है तो फिर मुश्किल पड़ रही है। और ये उठाकर मारा है ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन, क्या बढ़िया, सीधा बाउंड्री लाइन पर जाकर टप्पा खाया और विद द टाइम जिस तरह से खेल दिया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। पांड्या का शॉर्ट पिच थी और हिल्स शॉर्ट पिच गेम को बहुत अच्छा खेलते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं थी, लेकिन केवल अपना वजन बैकफुट पर केंद्रित किया। बदल पहले फ्रंट फुट पर थे, लेकिन वजन बैकफुट पर केंद्रित किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ पोजीशन लेकर पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और खुद ही आश्चर्यचकित है। पांड्या प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई ये स्ट्रोक किस तरह से आया। आजकल खिलाड़ियों में दोस्ती भी बहुत होती है, जो कि आईपीएल के खेलने तमाम देशों के खिलाड़ी आते हैं। बटलर तो एक तरह से मैं कहता हूँ यही उनका दूसरा घर है, काफी रन बनाते रहते हैं भारत में। तो अच्छे स्ट्रोक्स की प्रशंसा भी होती है। पांड्या की अगली गेंद और धीरे से टर्न किया और साइड में मिड विकेट की तरफ पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। और एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा कि विकेट के बीच में दौड़ और जजमेंट कि किस तरह रन लेना, उसके मामलों में इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को निश्चित रूप से पीछे हो गए। भारतीय खिलाड़ियों ने सिंगल्स लेने की, जैसे नहीं लेने की कसम खा ली थी, उन्होंने सिंगल्स उतने लिए नहीं, मौका भी नहीं मिला। ये भी बात क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग काफी अच्छी होती रही, लेकिन इंग्लैंड इतने थकावट के बावजूद इतने रन बन रहे हैं आसानी से, उसके बावजूद जिस तरह से विकेट के बीच में दौड़ रहे हैं, प्रशंसा करने की। 100 रन की भागीदारी अभी पहले ही हो चुकी है। नेक्स्ट साइड में पहले से हट जाते हैं, आउट साइड में खेल देते हैं। हिल्स बहुत अच्छा खेलते हैं, 65 रन तक पहुंच चुके हैं। इस बार भी उन्होंने आउट साइड में खेला, 65 रन 35 गेंदों पर, बटलर से 30 रन पर खेलते हैं, 106 रन बिना किसी नुकसान के। 11वां ओवर चल रहा है, भारतीय खेमे में एक निराशा छाई हुई दिखती है, और दर्शक जो बड़ी संख्या में भारतीय समर्थक हैं उनको भी काफी। देखिए क्रिकेट का खेल है, आपकी इच्छा के अनुसार खेल नहीं चलता है। ये यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद यॉर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन इतने अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं कि उन्होंने आसानी से उसे धकेल दिया ऑन साइड में, 1 रन ले लिया। 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद थी, लेकिन उसके बावजूद खेलने में सफल। अभी तक शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे, लेकिन इस बार सीम पर ही टप्पा खाया। सीम एक लाइन में दिखाई दे रही थी और उसी पर टप्पा खाया और वहीं पर उन्होंने यॉर्कर गेंद की थी, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड के बल्लेबाजों में आत्मविश्वास इतना ज्यादा आ गया उनके बैटर्स में कि आसानी से हर तरह की बाधा को पार कर ले रहे हैं। 56 गेंदों पर अब 62 रनों की जरूरत है। लगता है औपचारिकता बाकी है। पांड्या गेंद कर रहे हैं बटलर को, और बटलर ने खेलने की कोशिश की ऑन साइड में, लेकिन पैड पर लगी, थाई पैड पर लगकर गई ऑफ साइड में। 1 रन फिर भी ले लिया। तो रन जब चाह रहे या तो बारिश के रूप में बन रहे या बैट से लगने के बाद में बन रहे, कुल मिलाकर रन बनते ही जा रहे हैं। रनों की रफ्तार रुकी नहीं हुई। अब देखिए ना, 11 ओवर चल रहे, 11वां ओवर चल रहा है और 108 रन बन गए। इसका मतलब किसी भी बॉलर्स में ये क्षमता नहीं दिखाई दी कि बैट्समैन पर रोक लगाई जाए, सिर्फ रोक लगा जाए, अवरोध पैदा किया जाए, बेशक वही थी। फिर से सामना कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद हार्दिक की और शॉर्ट पेज बाउंसर सिर के ऊपर से निकल गई। ओवर की समाप्ति 11 ओवर से पूरे हुए, 108 रन बिना किसी नुकसान के। इंग्लैंड बिल्कुल जीत की राह पर, और जीत की हल्की महक भी उनको आने लगी होगी। I don't think halki, Sushil. I think it's very strong aroma that they're smelling over there. I can smell it here, so you can imagine what they'll be smelling it. 108 without loss after 11 overs, and chasing 169 to win. I think they're thinking about what they're going to do after the game, right? Where they're going to go and have a couple of drinks. I think that's what the England team are definitely going to do. Celebrate this, what is looking like a very facile win, and India. Well, perhaps thinking a little bit about what they've got to do in the future now in the team.
that can go ahead and win the World Cup T20. You know, one of the things that I keep talking about is that the only time India has won the T20 World Cup is when they did have the IPL, it was 2007. After the IPL has come in, which is perhaps the premier T20 tournament, India have never won the T20 World Cup. And this is Ashwin bowling to Butler, and he pushes the ball way down to extra cover. Cover picks up a single and moves on to 39. Hales now on 66. As I said, to my mind, one of the things I'm looking forward to is can he get to 100? Because England still have 60 runs and he has got 34 to score to get to his 100. Next one is clear back, but that's all they need to do right now. No risks whatsoever. England needs to take 110 without loss. 11.2 overs. Virat Kohli again, you can see on his face. I think the faces of the Indians crowd betraying what they know to be almost, I keep saying almost because this was the carry ball from Ashwin, played away to the right of Hardik Pandya. The throw not good enough. Had it been over the stumps, it might have been a run-out chance. Nevertheless, they did not do that. So fielding, the throwing, the bowling certainly not up to the mark. So it started that very first over from Bhuvneshwar Kumar when he conceded 3 boundaries, and that really set England on their way. I dare say it's going to be the last time we see a couple of these these players in blue representing India on any stage in terms of T20 international. That's short of length, cut away down towards deep point, picked up there by Pandya. Just the signal. That's all Butler needs to do as the captain. For Hales on strike. Now let Hales take the Indian bowling to the sword. Quiet faces, glum faces in the crowd. There goes Ashwin. This one is clobbered over deep strike. So easy there for Hales. 6 runs. Absolutely. We're not even shouting this out to the commentary box because it's become so commonplace. This is a 7-6 by Alex Hales. Slop sweep over square leg. The 6 and the distance 69 meters. And India's largest defeat in T20 World Cup, 10 wickets by Pakistan, the one we were talking about earlier in 2021. This one is cut away down to the right of extra cover and down to the extra cover boundary. 4 runs. Really, 27 runs in his 2 overs from Ashwin. England 123 without loss. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global rights holders. तो बिल्कुल औपचारिकता रह गई है और भारत की से फाइनल में पहुंचने की जो इच्छा थी वो काफी हद तक निराशा में बदल चुकी है। और कहना पड़ेगा कि जब इंग्लैंड के कप्तान और उनके कोच से बात की गई थी कि भाई दुनिया चाह रही है कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम पहले ही भारत को अटका देंगे। और दरअसल उन्होंने अटका दिया। आज जिस तरह का प्रदर्शन किया, एक पेशेवर दृष्टिकोण से उन्होंने सारा प्रदर्शन किया। बॉलिंग बहुत अच्छी की, बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, फील्डिंग बहुत अच्छी की, योजनाएं अच्छी बनाई। और योजनाएं बनाने के बाद देखिए, योजनाएं तो सभी टीम बनाती है, लेकिन योजनाओं को कार्य रूप में बदलना सबसे मुश्किल काम है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप जीत पाते हैं। इंग्लैंड ने आज अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दिया, इसी कारण आज इस स्थिति में है। और शॉर्ट ऑफ लेग थी, नए ओवर की पहली गेंद को पुश किया, आउटसाइड में 1 रन के लिए दौड़े, दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं। कोशिश लगातार कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि रन भले ही ज्यादा बनाने बाकी नहीं है, लेकिन क्रिकेट के खेल को गंभीरता से लेते और थकने के बावजूद, देखिए थक गए होंगे, थकान के बावजूद वे रन विकेट के बीच में जिस तरह दौड़ रहे हैं, 1 को कन्वर्ट करके 2 में बना रहे और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक्स खेले थे जब भी दोनों बल्लेबाज खेले। और दोनों एक दूसरे की ताकत को समझ रहे हैं। और यहाँ पर बैट का मुंह खोलकर स्टीयर किया 3rd बैन पर और 1 रन और ले लिया। बटलर बाद में खामोश हो गए। शुरू में तो बहुत तेजी के साथ रन बना रहे थे और हेल्स कहीं पीछे थे, लेकिन हेल्स ने जब नारकी यंत्रणा देनी शुरू की भारतीय बॉलिंग को, जैसा कि उनका नाम है हेल्स,
तो उसके बाद से बहुत मुश्किल पड़ी भारतीय बॉलिंग को, और हमने देखा कि 126 रन बन गए। अभी 13वां ही ओवर चल रहा, रनों की रफ्तार आप महसूस कीजिए कि किस आत्मविश्वास के साथ इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ रहा। देखिए हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बिल्कुल एक तरफा जीत किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो उठाकर मारा है बॉलर के ठीक ऊपर से मिडॉन के ऊपर, लेकिन लॉन्ग मिडॉन के तरफ जाकर जैसे ही फील्ड करने की कोशिश की, सफल भी हो। केएल राहुल वहां खड़े थे, पीछे जाकर गेम को फील्ड किया, लेकिन कम से कम 3 रन यहाँ पर जरूर लिए जा सकते हैं, और 3 रन ले भी लिए। 129 रन अब बन गए हैं, 40 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 13वां ओवर चल रहा है। इंग्लैंड आसानी के साथ फाइनल में प्रवेश करने की स्थिति में आ गया है। पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए कमर कसकर तैयार रहेगा, और भारत की जो इच्छा थी कि फाइनल में पाकिस्तान की खेले, और यहाँ पर ये क्या बढ़िया तरीके से दिल स्कोप कर रहे। दिलशान को भी लगता होगा कि ये स्ट्रोक तो मैंने निकाला था, दुनिया भर अब इसका इस्तेमाल कर रही है, और बटलर ने दिल स्कोप बहुत ही खूबसूरती के साथ किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन बटलर पहुंच गए 49 रन पर, और इंग्लैंड के भी थोड़े बहुत समर्थक हैं यहाँ पर, वो भी बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। निराश चेहरों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही, लेकिन क्या करें, क्रिकेट का खेल है, जो टीम बेहतर खेलती है वही जीतती है। और पांड्या कोशिश तो कर रहे हैं, लड़ाकू खिलाड़ी है। लड़ाकू का मतलब ये कि झगड़ा नहीं करते, लेकिन आखिरी वक्त तक खेला लड़ाते रहते हैं, हार नहीं मानते। शारीरिक भाषा कभी भी नीची नहीं होती, और कभी भी कंधे झुकते नहीं है, ये उनकी विशेषता है। वो बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। ये थोड़ी शॉर्ट पिच और बैकफुट पर जाकर पुल किया खूबसूरती के साथ। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बटलर का, और 6 रन। क्या बढ़िया स्ट्रोक था, कितनी जल्दी गेंद की लेंथ को पहचान रहे, क्या आत्मविश्वास के साथ खेल रहे। हम कह रहे थे कि आईपीएल में भारतीय खिलाड़ी खेलते, लेकिन विदेश से आते हैं वो यहाँ पर खेलकर, आईपीएल खेलकर कितने बढ़िया T20 के खिलाड़ी हो गए। जैसे बटलर भारत में खेलते रहे, और कितनी जल्दी गेंद को, शॉर्ट पिच गेंद भी थी। शायद पांड्या की प्रशंसा मैंने बहुत जल्दी कर दी, जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद मिली बटलर ने बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल कर दिया 4 रन के लिए। और हम देख रहे हैं स्टोक्स उनकी प्रशंसा कर रहे, तालियां बजाकर, और जिस तरह से खेल दिखाया, अर्धशतक छक्का लगाकर पूरा किया था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आत्मविश्वास से वो ओवर की समाप्ति हो गई। अगली गेंद को जैसे ही खेला, 13 ओवर्स के बाद 140 रन बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड का स्कोर। Most expensive over, that's not saying very much. England did 17 runs in that Hardik Pandya over, 15 runs before that Vyashwin over, 10 runs before that again Hardik's over. So if you look at the way that it's been going, I mean, in this particular over, 13th over of the Indian innings, India scored 3 runs, and England have scored 17. And that statistic does not sum up this game. No statistic will ever sum it up. But England have 29 runs to get of 42 deliveries. And the only thing that everybody will say is that it's going to be an early evening game in Adelaide for the fans and certainly for the teams. And there will be one team that will be much the happier, and that is going to be the team in blue and red, and that is England. And England with a new king on the throne, King Charles III, will say, well, here's our chance to get onto the throne of the World T20 Championship as well. And Pakistan will be looking forward to this contest because they played England in Pakistan in a series of 7 T20s. Even though Pakistan went on to win, I beg your pardon, England went on to win. It was very close, tight 4-3 scoreline at the end. So England, I think, will be actually wanting to play Pakistan as well, so that wasn't true. I think Pakistan will be ambivalent in their thinking. They'll play India or England. Here goes Shami against the ball that's slightly short of length, driven off the back foot. Well stopped there by Rohit. Had to take extra cover within the circle, otherwise that was headed to the boundary as well. As England then 140 without loss. Alex Hales on 80 and Joss Butt on 56. 29 runs to get. Can Hales get those 20 to take him to the century? Here goes Shami Tavian bowling to Butler. Comes in and bowls.
Alex ball come back in outside the off stump. The best batsman, hard lengths being bowled there by Shami, and pushed off the back foot once again to Rohit Sharma. Extra cover, and there is 4 runs. 2 dot balls once again, and as I've said, the interesting thing we say we haven't seen 3 dot balls on the trot ever in the England innings so far. So let's see if we can get 3 dot balls now from Shami. 140 without loss in the 14th over. Well, again, well over 10 runs and over. As here goes Shami. Right arm over, counting the balls, and this one is hit in the air. Over extra cover, the ball trickles down towards the extra cover boundary, and that is 4 runs. So 4 easy runs, really. Just have to sit and get under the ball and hit it over extra cover. So no third dot ball. As small measure of comfort to the Indian bowlers. And that really, as I said, sums up the game. The way that India have bowled and England have batted. That takes Butler on to 60. Alex is on 80. And England not on 144 without loss. The Adelaide Oval, which is a very morose Adelaide Oval. Only the cross of St. George flying in the, or being waved in the stands. Otherwise, the Indian tricolour now, I think, furled and put away. Not flying at all anywhere that I could possibly see in the stands, and rightly so, because this has been a dismal bowling performance by India. It really started with the power play, where India were not able to get off the mark, get off the blocks, and carried on even though they were able to reach 168. Really, the way that England had started and completed, not just started, but completed the game. To my mind, that is always more important. This one in the air, hit off the middle of the stumps, and over the top it goes. Straight over the six, over the straight field for a 6. And the third 50 comes in 21 deliveries, just 21 deliveries. So really, I mean, making a mockery of the Indian bowling. It's under the ball, straight down, absolutely straight as a die, 100 meters. That 6, the biggest 6 of this game so far, and one of the longest boundaries. No movement of the seam whatsoever there for Mohammad Shami, and the ball sailing into the stands at straight field. 10 runs in that over already. Last ball to go of the 14th over. There goes Mohammad Shami. The ball, it is a slightly slow delivery. Is this going to be caught? Is there a chance for this? No, it's dropped. To add insult to injury, it goes and trickles onto the ropes at long on. So the one bounder, one wicket that India might have picked up was dropped by Suryakumar Yadav. And, well, England move on to 154 without loss, meaning only 15 to win of 36 deliveries. बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है कि कौन सी टीम जीत रही है। अब साफ लग रहा है इंग्लैंड की टीम तो फाइनल में पहुंच रही है, और अब ये बात सोचनी होगी कि भारतीय टीम को समीक्षा करनी होगी कि क्या गलत हुआ और क्या सही रहा। देखिए, कोशिशें तो बहुत की थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले पहुंच गए थे, 15 दिन पहले चले गए थे अभ्यास करने की नीयत से, और कहा जा रहा था कि इसके कारण बड़ा फायदा हुआ। लेकिन देखिए, ये क्रिकेट का खेल है, ये समझना चाहिए कि आप अकेले क्रिकेट नहीं खेल रहे। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपकी विरोधी टीम भी हारना पसंद नहीं करती, वो भी अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोशिश करते हैं। और क्रिकेट में देखिए, हुनर का मुकाबला हुनर से होता है। आप केवल जोश से क्रिकेट नहीं जीत सकते। तकनीक और साथ में सही वक्त पर सही योजना और उनको कार्य रूप में बदलना। इसी बीच नए ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, और 1 रन ले लिया आसानी के साथ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से खेल योजना के साथ खेला इंग्लैंड ने, उसकी प्रशंसा करनी होगी। और जो पिछले बार कैच छूटा तो कुमार यादव, तो न केवल कैच छूटा बल्कि बाउंड्री लाइन की तरफ धकेल भी दिया गया था कैच, तो एक तरह से 4 रन मिल गए, और अगली गेंद को ऑफ साइड में खोदा। अब बिल्कुल विजय के नजदीक पहुंच रहे हैं। हालांकि डॉट बॉल बहुत अरसे बाद हुई, ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर को खेला अक्षर पटेल की इस गेंद को। अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा प्रशंसा यहाँ पर नहीं है। कुछ ही लोग हैं बार्मी आर्मी जिनको कहते हैं, वो इंग्लैंड के समर्थक हैं, एक जगह रहकर इंग्लैंड की जीत की कामना करते हैं और हमेशा उन्हें चीयर अप करते रहते हैं। ये हल्के हाथों से खेला, फिर से ऑफ साइड में, और फिर 1 रन दे दिया। तो कोई अब केवल औपचारिकता है। 15वां ओवर चल रहा है, 156 रन बन चुके हैं, 13 रनों की और जरूरत है।
इंग्लैंड ने सोचा तो होगा कि शायद जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद थी और विकेट कीपर यहाँ पर स्टंपिंग भी कर सकता था, ये चांस मिल भी गया था, लेकिन नहीं हुआ। तो आज भारतीयों के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा। अक्षर पटेल की गेंद पर बैट से लगी और ये रन आउट कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया, कलेक्ट नहीं कर पाए, पैर पर लगी, बैट से लगने के बाद पैर पर लगी तो स्टंपिंग का, लेकिन विकेट कीपर नहीं ले पाया तो क्या कर सकते हो। तो आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है भारतीयों के लिए। 156 रन बन चुके हैं, 15वां ओवर चल रहा है, यानी 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार अभी भी बनी हुई है, जो शुरू से चल रही है। यहाँ पर चकमा खाया, अब स्टंपिंग किया, लेकिन क्या फायदा, ओवर समाप्त हो गया। 156 रन 15 ओवर्स के बाद 156 रन बिना किसी नुकसान के। I think this is the most economical over for India. And how many runs in this over? Just 2 runs in this over. Amazing. But unfortunately, no wicket. Could have been stopping, but the ball went onto the bat, then onto the bat, and then went away off the offside. And the wicketkeeper was going down the leg side because that is where the ball was headed. So we're going to hear after this game is over our program, the hero of 2020. The anchors are Sakshi Manwal and Mahavir Rawat, and the experts are Benro Singh, former cricket player, and the very well-known journalist S. Canon. So stay tuned to hear their critique of what they have witnessed, you have witnessed, you have heard. It has not been a happy thing to hear, and it may well be, Sushil, that this 16th over that is going to be bowled is going to be the very last over. Here goes Mohammad Shami. This one in the air and flying away down towards deep extra cover. It bounces in front of Hardik Pandya, and they're able to pick up 2 runs. Very simply picked up. So I'm sorry, you may not get another chance of commentary, Sushil, the way things are going. But I will, if it is just the last ball to go in England to it, I will hand it over to you. As you said, Opcharikta will be finishing touches as a 10-wicket win, which is what is on the cards right now. My goodness me, in a semi-final, which is always a pressure game. It cannot, even the words command performance don't sum up the way that England have played. All batted, fielded, completely outplayed India in this semi-final. Not even the consolation of 1 wicket for India so far. They could have had a couple. A difficult stumping, a difficult catch, but that was part of it in any case. And here goes Mohammad Shami, gets the slow delivery. Once again beats the bat outside the off stump. I haven't seen enough of that type of thing. Throwing his fingers over the seam, the ball going straight through. And then you can see over there at the England camp, everybody just wondering how this happened, because I don't think anybody read this happening, Sushil. I mean, this type of win, nobody thought. I mean, at the halfway mark when India had scored 168, we were talking about India have a good chance if they're able to pick up early wickets. That was put paid to in the very first over when England picked up those 13 runs. The slow delivery and hammered away down towards long off. The other picks up the ball, keeps the scoring down to 1. And England move on to 159 without loss. So 10 runs to go in 3.5 overs. So you might get a chance. 4.5 overs. Thank you, guys. I was looking at your shot here. I looked at 16 there. But you're right, absolutely right. 27 deliveries, 4.5 overs there. That's right. He and I can do the maths now. As Hale's now at 81. Unfortunately, he won't be able to get to that 100. Don't think he'll be worrying about that one. Is in the air. And just to the right of Hardik Pandya, flatters into the boundary. 4 runs, a deep extra cover. And, well, how many runs to go? 6. How many deliveries to go in this over? 2. Sushil. No, you never know. You can bring in this, well, what should I say? Result. I will not say what it's going to be. You can bring in this result. 6 from 26 deliveries and England well on the way to a 10-wicket. Rohit Sharma thinking what could possibly have been, and this time hitting on the pads, full toss. Perhaps he got the inside edge because the umpire works away from the stumps. That's what Hales talks about. He said, listen, I got the inside edge. And he was
able to pick up the single. The one that went down to deep extra cover is once again the off cutter, but it was slightly short of length, was able to get under that ball, ready to away to the right of Harjinder. You can see the Union Jack flying, the cross of St. George flying, no tricolour flying, unfortunately, with the athlete of the 5 to go. This is the slow delivery, going into the air and over the boundary at long on, 6 runs, and England win by 10 wickets. The second semi-final at the Adelaide Oval, and I can tell you it has been a performance that has left me certainly slack-jawed. The way that they have done it, absolutely magnificent. High fives in the England dressing room, no fives in the Indian dressing room as England move on to the MCG to face Pakistan on Sunday. And I can tell you that is going to be a cracker of final, because both teams, to my mind, are the best teams in this tournament, even though Pakistan did lose to Zimbabwe. And as I tell you now that England have won this second semi-final by 10 wickets. Stay tuned for Hero of the 2020. सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है, एक और चौका भारत को मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहां पर। आपका अपना प्रिय चैनल आकाशवाणी ये आया फिर से आपके लिए T20 वर्ल्ड कप 2022। भारत के सभी मैच FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले स्टेशन, DRM और DTH पर, और अन्य मैचों की कमेंट्री LRS, FM रिले स्टेशन, DRM और DTH पर। तो सुनना ना भूलें T20 वर्ल्ड कप का रोमांच सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global rights holders. Hero of the 2020. Hello and a very warm welcome to all the listeners of All India Radio. दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, and the big news today coming in from the T20 World Cup 2022 that England have defeated India by a huge margin, which was of 10 wickets. They were able to chase down the score of 168 runs with ease, almost making it look like it was a cakewalk. I welcome you all to Hero of the 2020. मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद है my dear friend and co-host for the day, and a man who seems quite shocked, trying to make sense of what happened today, Mahavir Rawat. Good evening, Mahavir. वैसे इस इवनिंग के बारे में फिलहाल तो कुछ गुड नजर नहीं आता, बस एक गाना दूर साहब का याद आ रहा है कि क्या से क्या हो गया वफा तेरे प्यार। तो इस समय जिस तरीके से इंग्लैंड में आए, दे केम, दे सॉ, दे कॉन्कर्ड। हमारे साथ एस कनन और बंटी सिंह जी मौजूद हैं, और शायद हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स हमें समझाएं कि कनन सर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। आई मीन वी थॉट दैट इट वाज अ गुड स्कोर, 168 वाज अ better than an average score on this wicket. What exactly happened? How did the English play so differently on a track that you played on? They should not name him Hales. They should name him Hale, because today it was a hailstorm. And regarding Butler, I think he just battered us. I think it just shows that so much of difference in the quality of bowling between the two sides. And we were discussing before the show, quality of bowling which we saw, substandard bowling from the medium pacers, 120, 130 kmph bowling. And then we saw the two spinners, Akshar and Ashwin. So this is one of the weakest looking bowling performances. But to lose by 10 wickets, sorry to say, is disgraceful. मंडू जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो the thing when we came down to bat, when India came down to bat, we were able to make 168. I still remember by the end of 15 overs we were 100 and making some 56 odd runs in the next 4 overs, and we saw the Englishmen today chase down the target. Do you think somewhere there was a polar contrast difference in the body language and attitude with which the Englishmen went in with, and in with the attitude we played the game with today? Definitely, surely. They came with a better plan, and they have executed their plans very well. So देखिए, टाइमिंग अगर आप देखिए, रिजल्ट के बाद बोलना बहुत आसान होता है। हालांकि मिड शो में
में बात कर रहे थे कि 168 डिसेंट स्कोर है। बट आप ये देखिए कि जब इस टूर्नामेंट में हम लोग की भारत की टीम आई थी तो सबसे ज्यादा हमारा कंसर्न था बॉलिंग। हमारी बॉलिंग बहुत वीक आती जा रही थी। जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं सारे सब यही कह रहे थे हमारी बॉलिंग बहुत वीक है। वो बॉलिंग देखिए टूर्नामेंट में तो चलती रही, ठीक चलती रही और किसी न किसी तरीके से हमारी बैटिंग ने कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट कर और हमारे को निकाल दिया। लेकिन आज वो बॉलिंग जैसे करण सर ने कहा टोटल एक्सपोज हो गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बॉलिंग हो ही नहीं रही है, कोई प्लान ही नहीं है इनका बॉलिंग का। और देखिए खेल तो आज लग रहे थे गेल, उन्होंने ऐसा मारा कि बस याद रहेगी अब काफी देर तक हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कंसर्निंग है, दे हैव एक्जीक्यूटेड देयर प्लान्स वेरी वेल। बंटू सिंह जी, अब आपने प्लान के बारे में बात की और बॉलिंग के बारे में बात की, तो इसी को मैं आगे लेके जा रहे हैं कि यही वो मैदान है जहां पर बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों ने भी हमारा अच्छा खासा जो है हमको स्वाद चखाया था बाउंड्रीज का। तो हमारी गेंदबाजी में स्पीड तो नहीं है, ये हम जानते हैं। स्विंग अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो ऐसा ही हाल होगा जैसे कि आज होता रहा है। और क्योंकि ये वर्ल्ड कप अक्टूबर बीच में स्टार्ट हुआ, विच इज नॉट अ टाइम टू प्ले क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहां पे वर्ल्ड कप हुआ और वहां पे अच्छी खासी स्विंग हमको हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और नाउ वी आर मौसम गर्म होता गया, स्विंग गायब और हमारी विकेट गायब और हमारी बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा है कि स्विंग गायब, देखिए इस मैच में तो देखिए फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले का बहुत अहम रोल था जिसमें इंडिया ने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला और जहां तक मैं समझता हूँ इंडियन ने वो टोटल आउटप्लेड कर दिया हमारे को पावर प्ले में। देखिए हमारा बॉलिंग स्टार्ट हुआ, भूमि ने फर्स्ट ओवर में 3 बाउंड्रीज खाई। देखिए 12 रन बनने और 3 चौके खाने इसमें फर्क है, डिमोरलाइज हो गई वहां पर टीम। जी, और इस समय पोस्ट मैच सेरेमनी भी चल रही है जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच अगर हम बात करें, द मोस्ट क्रूशियल वन over there, Alex Hales winning out to become the player of the match today. 86 he has been given. He made 86 in just 47 balls, which included 4 fours and 7 sixes, and thereby Alex Hales has been given the player of the match today. And that, of course, is no surprise, I think, gentlemen, that has come into picture, Canon. There is no surprise at all. I think there is no room for debate, no room for discussion. I think it was a cakewalk. He just had to go and collect the trophy. It was as simple as that. Just shows the way England are dominating and what happened in their first match against Ireland. From there to now, they've been on the prowl, so that is what they proved. Professional and winning the toss, the decision they took to field first. All that. Yes, and we'll take directly on this. Gentlemen, अभी सीधे हम पोस्ट मैच सेरेमनी की तरफ चलते हैं। I'm really happy with the way I played. Yeah, it's as special as it gets. There was intent right from the beginning. You decided, was that game plan before you went into bat, or did you suddenly think, oh, hang on, this looks good to go? I think this is one of the best grounds to bat in the world, especially in a power play. It's a really, really good surface, great value for good cricket shots with smaller square boundaries. It's a ground I've got good memories at and a ground I enjoy batting at. This must obviously be a special moment. You've taken your side into the final of the T20 World Cup. Were there moments when you thought, well, hang on, will I get this moment? Yeah, for sure. I mean, I never thought I'd play in a World Cup again, so to get the chance is a very special